टस्कर्स की क्या बूस्टर राउंड में बदला ले पाएगी हीरोज का खेमा। सबसे पहले बुलाने जा रहे हैं टीम ऑफ टस्कर्स पालानी टस्कर्स। With the inclusion of Teja Nayak and in the absence of Shashank, they are coming to conquer Hampi Heroes. The Kannada team, the Blue Brigade, needs the first victory, and the Tamil team, the Green Brigade, also needs their first victory in the booster round, where both the teams have suffered losses in the booster round. The Hampi Heroes going down to the Periyar Panthers, and Palani Tuskers, of course, going down to the Nilgiri Knights. Good encounter that they faced upon their stronger rivals, and now they're facing up against each other to make sure they get that first points on the booster round, as the referees have taken the field. And Palani Tuskers, Tamilarasan Kalasamy and Purusathaman Palanivel in both the corners. Ram Kumar, Jayasurya Nagarajan and Mukesh Kannan will be in the raiding duties, and Ajay Mutaya and Vidalai Viswanathan will be in the cover position as well. And wonderful to see as Jet Pashupati, Dinesh Kumar, Ganapati, Manikandan Subramani, Ayanathan Ranganathan and Stuart Singh will be in the substitution lines along with coach Tivakaran. Tala Tivakaran, that's what we call him. And for the Hampi Heroes, it's a big change. Right, I just did not expect this sort of a change, and we wonder why that this change has happened. Yes, we will find out why, because in the morning, Shashank and everybody went to the Mysuru Zoo to go out there, and I wonder what happened to Shashank at the zoo as well. We will speak about that. As Sukesh Kulal and Narsimurthy on the corners, Madhu Kaverappa, Teja Nayak and Gagan Glorious Gowda in the raiding unit. Shiv Kumar, and also the cover has been replaced. No Suhas Nagraj. Rutik comes in. Yeah, Suhas Nagraj, Krishna Kumar, Devanathan and Sudarshan in the substitution lines. Right. Going to the zoo, I think something has changed with Narsimha's mind, the coach. Hampi Heroes versus the Palani Tuskers. Yeah, this is the overall history as in this summer edition. Of course, they have gone against head-to-head once and they've had a tie. But overall, they have 4 wins in this history. But in the summer edition, yes, you see that one tie that came in against the Palani Tuskers for the Hampi Heroes, and the toss was flipped over. Ajay Mutaya says, I need the coin, and I will also say, I will choose the coach. So the first raid will happen from the captain Madhu Kaverappa. I will really go out there and ask why Suhas Nagaraj has not got his original right cover position. Shiv Kumar has a new partner, but Jayasurya Nagarajan, yeah, what a turnaround that he's brought on to the Palani Tuskers. He was there in the top 3 raiders list, but just been dislodged by that wonderful raider of the Chambal Challengers, the Sanskar Mishra. But then he is on the top 4th list. Jayasurya Nagarajan, wonderful numbers for him as well as he runs in. And along with that, it is that man where Gagan Glorious Gowda. That's why he is glorious. 126 rage points, top second on that top 3 raiders list. 95.45 his rating strike rate. But he will not have Shashank to support him today. So how will Gagan Gowda watch this match? It will be really nice. One loss, look at that, in the summer edition for the Palani Tuskers, and that came yesterday against the Nilgiri Knights. Apart from that, there's no black mark at all for this Green Brigade. They've done really well, along with Tala Tivakaran, the coach. He's made sure all those timely changes come in. Very nice, friendly unit. They know their game, and also the sim goes to with the Hampi Heroes. They are fresh after having a nice talk. I think they've even had some breakfast with some giraffes, elephants and crocodiles in the Mysuru Zoo, the Chamaraja Odair Mysuru Zoo. As we set up the platform ready. And also I have my fellow commentator Ryan joining me soon as we get into the countdown and get this match started.
toss was won by the Palani Tuskers. First raid will happen from Madhu Kaverappa as he raids from left to right of our screens. And I have Ryan with me in the commentary box. Good evening, Ryan. Yeah, coming soon, Ryan. Madhu against the strong corner of that right. Purushottam Palanivel does not even go out there inside the back line, does not play too deep inside. Just checks the waters and comes back. Ramkumar now. Sukesh Kulal should understand that Sudarshan is back after a short little break. And Sudarshan, that left corner defender, he will be behind his back if there is a mistake that's happening from Sukesh Kulal on that left corner. Sudarshan will take his place as Teja Nayak now has taken Shashank's place. And nice to see that the toe touch was attempted on Jayasurya Nagarajan from that left end. No, does not get anything. Jayasurya comes in for his first raid. Nice that all the raiders have now tested the waters. Don't tell me now the next raid will be Hampi Heroes' do-or-die raid and Gagan Gowda going in for that. You don't have to do that, isn't it? Your premium raider should not be going in for your do-or-die raid. He needs to be on the match. Jayasurya thinks he's got the bonus. Even I think he's got the bonus. Yes, he's got it. Brilliant work. Under the corner of that right side, right corner, getting it. Now, do-or-die raid. Gagan Gowda. Was he ready for this? His first raid of the match being a do-or-die raid and ankle hold. Diving, wonderful ankle hold. Tamil Arasan Kalasamy. 1 point. Wow. Where has he unearthed from Divakaran? Tamil Arasan has been really good. 3 matches in a row. He's won that Best Defender award. And look at that, diving, double ankle hold. Right. And no wonder he idealizes Surender Nada. And nice to see, look at that. So very nice. You know, all our Dravidian teams going out there. Oh! Strong block and dash from Rutik. I think Rutik also has gone out with that. Right cover, Rutik. Bonus plus 1 point. Bonus Palani plus Tuskers. 1. Right out 1 point. Hampi Heroes. Yeah, each 1 point. That's what it is. He's got the bonus point. Nevertheless, wonderful block and dash from Rutik. Yeah, in the tackle, what happened with Gagan Gowda, if we can go back to that replay. After the tackle, we saw all the defenders from the Palani Tuskers going out there and tapping on Gagan Gowda's head and saying, okay, my friend, are you okay? Are you fine? Did we go ahead and twist you left, right and center? And we are sorry for that. That is so nice to see. That is really that Kabaddi spirit we always keep speaking about. Respecting each other. And we'll just go back to that replay whenever possible. There. How many times have you seen that? Never. I've been so lovelily seeing that as well. That was Jayasurya Nagarajan who tapped the head, and now he taps the waist of Shiv Kumar from that left cover on that running hand touch. Brilliant work. And this is so lovely. Gagan Gowda now has no problem because there is no pressure of the do-or-die raid. Watch out. Tamil Arasan will be there and he gets a running hand touch. Right cover. Does not go back in time. And 1 point. Hampi Heroes. Sort of a high line thing from Vidudalai Viswanathan. Shouldn't have been high line, should have been a little back. And I asked him why have they named you by that. Vidudalai, of course, means freedom. And he said, Viswanathan, my dad, is a very big follower of the great Periyar. Periyar is a revolutionist. Yeah. And he was there. He was a very big writer himself, Mr. Periyar. He's made sure he's brought in a lot of socialistic changes into the Tamil culture. Because Viswanathan was a big fan of Periyar, they named him Vidudalai Viswanathan. Ryan, coming in. Yes, Naveen, I was listening to you early on, and right now this game, Hampi Heroes and the Palani Tuskers, I've been so excited that I have no clue why my mic also gave me heart right now. Just like the heart has been extended and, points have been secured, but the Hampi Heroes trail early on. I will tell you why. Because I think one superb guy
asked you which equipment you use on the comment. And that's why that did not work today. Yeah, that super duper dude, honestly. I'm like so nice of him. As Mukesh Palani Kannan Tuskers. gets Jersey number another 2 out. point for the Palani Tuskers, and jersey number 2 will have to head back to the bench. Yeah, Rutik, you've got your chance, my friend. Utilize it. Utilize it in a nice way. You're standing in that right cover position, then suddenly on the left cover. Does not go back in time. Right, Gagan Glorious Goda. He's got a lovely chance today to become the top raider because Durgesh Kumar, of course, is injured. He will not play for, I think, a couple of days. So he can go out there and enjoy this. He's been tackled once. He still yet to open the account. And also goes back empty-handed. I think he needs 6 points, if I'm not wrong. I think he needs 6 points to overtake Durgesh. He can do that today. That'll be really nice for Hampi Heroes. Ryan, did you get your shoes on the delivery? Yes, so I think the person, my neighbor who's bringing it has arrived this morning. So, I mean, she's probably jet lagged. So I was thinking of going and visiting and getting the shoes. But it shall wait, you know, after this game, this exciting game. And after that, I will head over. And we now have a do-or-die raid. Teja Nayak coming in for the Hampi Heroes. And he gets a touch on the thigh. Very nicely done. Teja Nayak getting the point for the Heroes. The covers on both the sides are playing a high line defense. They're not going back. Virdali Viswanathan once again. Does not go back in time. Not good. Not good at all. Need to play just inside the back line. Yeah, no, the reason I asked that is because Ram Kumar is a customs officer who's raiding. So that friend of yours who's brought in jet lag, yeah, I understand. And I'm sure. Sukesh Kulal. Once again, that left corner. It's been a problem. And I will not be surprised if Sudarshan comes back very soon on the mat. Yeah, Ryan, on that discussion of your shoes that's come in. Which country is it coming in from? It's from the United States of America. Oh, he just said, speaking of US. And Gagan Gowda gets another point, inching closer to reclaiming that top position. And speaking of US, I still remember the Kabaddi World Cup that happened a few years ago in India. We had a team from the US participate in Kabaddi, and Mr. Troy Bacon was the captain of the US team, if I'm not wrong. Yeah, you're very right. Very much right. Yeah, you know what? We just said, running and touch. Madhu Kavirappa in that left corner. That corner position is being a problem area. And he says, why is the right cover not coming behind him? There, look at that. Rutik does not go behind him. Rutik, you're a cover defender. Go for it. And that is why Madhu Kavirappa was not angry and he was just disappointed that the cover did not go in. Now that friend of yours from Joe Biden's presidential rule could pass through on the customs. Yeah, I mean, I'm sure it's a friendie of yours, not a friend. Correct? Bro, it's my neighbor. Whoever. It's a friendie. No, it's I address her by auntie, so as Jayasuriya here. 1 point. It's another point. And Palani Tuskers just can't be stopped. No, the reason why I was so confident and sure that it was a girl or a lady, whatever, is because you gave time for that person to recover from the jet lag. Would you have done the same thing? It was a guy? I don't think so. எங்க வீக்கா இருக்கும் ரைட் கவர்ல வீக்கா இருக்கும் புரியுதா இங்க அலோ பண்ணா போனஸ் போட்டா நல்ல போனஸ்னா விட்டுறா புடிக்க முடிஞ்சா புடி அதே மாதிரி கிப் கிடைச்சா புடிச்சிரு ஆனா கைய போய் ஒரு ஆள் எடுக்கணும் இங்க பாரு ஓகே லெட்ஸ் கோ டு நரசிம்மா அஃபென்ஸ் நம்ம ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கா ಹೇಳೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ ಆಗಷ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಳಾಗಬೇಕು ಈಗ ಅವ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ನು ಆಡಿಸ್ಕೊಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಾ ಆರಾಮಾಗಾಡು ನಿನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ right. You know what first Divakaran said? Exactly the point that I said. Cover the point to kudukade. That's all he very clearly said. He said Virdali Viswanathan and Ajay Muthaiya, both of you are giving away points. And he said Tamilarasan, only when he comes in deep, if he goes for the bonus, let him take the bonus, that's okay. But if you get the chance, only then go for the attack. That's all he said. And you know what Narasimha said?
to Narsimurthy. I am not getting any attack from you, my friend. Should I change you? He asked him on his face, should I change you? Substitution. Hampi Ah, Heroes. that is what has happened. What inning? Narsimurthy has One been out. changed, and that very not so fair guy comes on the match. Right. Right? Just bright. I've asked him to reduce his brightness, he's still not reduced it. Krishna Kumar, one of a nice guy along with the Hampi Heroes side. The Palani Tuskers here right now, settling in early Arrise, on. Take a 1 look at this. point, They Palani just continue to Tuskers. score Lesson points number right 2 now. out. Hampi Heroes struggling on the defensive front here, Naveen. Yeah, totally. I wonder what has gone wrong with Ritik. And Krishna, he just got another opportunity. And this is the second time Gagan Gowda comes in for a do-or-die raid. I think he's still not opened his account. And that is not good. I think they have given him the bonus away. Because on the other side, it's no problem. Yeah, he's got the bonus, Bonus point. nevertheless. Hampi Heroes. Because on the other side, there are less number of defenders. Do-or-die raid now, Ryan. Action on in a super tackle situation. Yeah, it's not a do-or-die raid, is it? No, it's Yeah, not. I think that the music, Yeah. music there just got us off. However, super tackle situation, an exciting situation because even Jayasurya loves to make use of such opportunities. Any good raider, whenever there's 3 defenders, you can get the better of them in many occasions. It will not happen right now as we head into the last 9 minutes of this first half. Correct. Smart decision by Jayasurya. He says, okay, let me not get too greedy, let me go back. And in the previous match, Nilgiri Knights came back with 3 super tackles, and Gagan Gowda! Has he got a super raid? I think so. 2 points. It's a 3-pointer. Hampi No, 2 points only. 2 points only. Lesson number Lovely 33, camera work 1 there. out. From, I think that is Karthik, who's standing on the top of the shacks. A nice kick attempted. And the right cover Right. also. Vidal Viswanathan should go out there with Tamil Arasan. Yeah, wonderful. And you know what today? I think the man who is standing on top of the shacks will be feeling also on top of the world. 1 point. Palani Tuskers. You know Lesson why, number Ryan? 14 out. Karthik, our Cam 2 cameraman, is today celebrating his marriage anniversary. Oh. Yeah, and Krishna does not go back in time. Right. So happy marriage anniversary there, our lensman, Karthik. Yes, shout out to Karthik, and I think Naveen is Gagan Gowda the most popular player in this edition because I saw him get that point and I heard a roar from the crowd. Totally. And I'm sure you might give me more insights in regards to Gagan Gowda being the man here. Totally, the only guy who's in the competition with me, for all the shout out that's happening here in the Chamundi Vihar Indoor Stadium is Gagan Gowda. And apart from him or apart from me, only he gets the shout out like that. He's so popular. Is the Also in competition so commentary, easy? I told that I've requested all the girls not to call him Anna. He feels bad about it. I think from that day, no girl has called him Anna. He also accepted that in the post show. Double entry. Ah. 1 technical point. Come on, Hampi Palani Heroes. Tuskers. Who was the culprit? Right. Come on, let's watch it from Karthik's cam on the replay. I think both Teja Nayak and Madhu Kaverappa, I think both of them entered and Madhu slips on. Right out. 1 Oh. point. Palani Tuskers. Not good, not good. Is not looking good on the knees. Yeah, Oh, I oh, think he ankle, rolled his ankle. ankle. Yes, he Yeah. did. He rolled it, and that's honestly one of the worst, moments of pain to experience. And we can see everybody attending to him. Right. Yeah, correct. Oh, look at that. Divakaran, take a bow. The opposition coach. He's coming from the opposite side of the court and he's carried a player. My God, this is Kabaddi spirits at its high and I'm really getting goosebumps here. I have not seen an opposition coach carry away a player, Ryan. I'll tell you what, Ram, just please clip that video, our EVS operator, clip that video and keep it. That is humanitarian levels at its highest moment, and that is Kabaddi spirit at its highest place that it can be. Divakaran,
The opposite coach carrying away an opposition raider, that too a captain of the opposition side. And we just keep speaking about some political issues between two states. Come on. Take this, guys. Take this. Indeed, Naveen. That is indeed a beautiful moment, and we can expect a beautiful raid here, courtesy of Jayasuriya. Question is, can a beautiful tackle come in? No, because a beautiful kick has been executed by Mr. Jayasuriya in the dual situation, and Palani Tuskers go 2 times up the Hampi Heroes. Yeah, because it was Teja Nayak, isn't it? There were no defenders. There were 2 raiders on that, Gagan and Teja, and Jayasuriya had no problem whatsoever. Just to kick him out. Gagan Goda, he needs to get some points. Come on. He needs to revive players. And today, without Shashank, he's got extra responsibilities to go out there and get points. He will be given away the bonus. Yeah, I think apart from that, nothing's going to happen. If we can go back to that replay, if possible, where Divakaran is carrying Madhu Kaverappa, the captain. I have not seen this. I really have not seen this. Any opposition team's coach carrying an opposition raider, that to the captain. Shashank, no, Kulal. Sukesh Kulal. Once again, not a proper ankle hold. 1 point, Palani Tuskers. This is falling Jersey apart. number 4 out. Yes, it's all going the Palani Tuskers way. The Hampi Heroes are looking for a hero within themselves to come and save them. You know, it's like you see a bunch of heroes. You know, there's always a moment when all of them are being taken down by the villain, and all of a sudden it's that one hero that comes out of nowhere and saves them. You know, so the Hampi Heroes looking for that. Gagan Gowda's been the leader of the pack when it comes to scoring points, and he does it! This is the heroic of Gagan Gowda, both of them swearing on the mats. And will the point be given? Bonus plus 1 point, Yes, it Hampi is. Heroes. Jersey number 1 now. And he also went into the lobby to prove it. Yeah, he's bonus plus 1. And Vidala Viswanathan. I'll tell you what, both are very Substitution, Hampi Heroes, truthful. please come. There's a big touch, Vidala. There Jersey was a number big touch 16. onto your thighs. Both the players are 77 very out. truthful to each other. Right. But not on that occasion. Gagan saves the all-out. But for how long? There you go. Suhas Nagraj and Srinivas. This is the trusted combination. Shiv Kumar and Suhas Nagraj. The trusted cover combination. Back. Goes for the double tie hold. And Jayasuriya Nagarajan. This is why I say this is the trusted combination of the covers. Super tackle Right attempted. That's the Super proper tackle. first tackle 2 point point. for the Hampi Hampi Heroes. Oh, this is Kabaddi, ladies and gentlemen. Look at the sequence. You know, you have a very good raid followed by a very good super tackle. A 2-point raid and a 2-point super tackle is entirely changed this game once again, where the Hampi Heroes are very close and within reach. Suhas Nagaraj coming in and just 3 points separating these two teams, and 2.5 minutes remaining. Clock just ticked so fast over the last few minutes, Naveen, and I'm sure it's just gotten a lot more exciting. Plenty more to come. Yeah, definitely plenty more to come. But I'm not understanding. There you go. This is a wonderful, wonderful visual, guys. Divakaran in that black t-shirt is the coach of Palani Tuskers. And he carries off Madhu Kaverappa, the opposition's captain. Thank you so much, Ram and Deva, for that visual. Running kick by Ram Kumar on Ritik. 1 point, Palani This is why I Tuskers. feel Jersey bad number for 2 Ritik out. here, and Ritik was given the opportunity ahead of Suhas Substitution, Nagaraj today. Hampi Heroes. And he's Jersey not number utilized the 77 opportunity in, at all. There you go. 27 So simple. out. And what are you asking for Shiv Kumar to come for the help, Ritik? Should have been you who goes back in time. I'll tell you what, as Gagan Gowda once again comes in for a raid. Tamil Arasan misses the ankle hold. Vidala Viswanathan today is having a horrific and a horrible day. 2 point, Hampi Heroes. Jersey Yeah, number it's 33. definitely 1 not out. a Vidala's game. And Hampi Heroes, this is a super raid for them as they have 3 points. And I know what you're laughing at, Naveen. Has that been clipped? Has that been clipped? That is nice. Jai Kumar showed 4 points first. Bonus plus 3 fingers. Then slowly he just folds his ring finger and says, hang on. It's just bonus plus 2. That's it. Oh my God. Yeah, but nevertheless, it's a super raid. I see. Oh, Krishna, come on. What are you doing? Sudarshan. Sudarshan has been brought onto the mat. After a very long time, he's playing a match. He was on a break for a while. And I'll tell you what about Sudarshan, Ryan. As a friend,
You cannot trust him is what his players say, because whenever he goes out and puts out any challenge on a friendly way, of course, if he loses the challenge, he will never accept that he had committed for the challenge in the first place. Like that, you know, his small moustache that he's just got that nice lines of moustache, that Sudarshan, that left corner. Watch him. His moustache had to be shaved off like more than 5-6 times. He has challenged to shave the moustache off. He's lost the challenge and he's not shaved the moustache, Sudarshan. Naughty fellow. And you know who the partner in crime with him is? Is Suhas Nagaraj. Oh, these team stories are always exciting and enthralling to listen to. As a halftime, Palani Tuskers, a 1-point lead is what separates these two teams. Palani Tuskers coming on strong, but the Hampi Heroes waking up in the later stages of the second half. Take a look at this. Rate points all square, 12 points each. The tackle point, 1 tackle point for the Hampi Heroes. They were not getting any tackles, but they got the super tackle and a tackle at the end of this first half, and a couple of extras going in favor of the Palani Tuskers. So far, halftime 16-15 in favor of the Palani Tuskers. We will head into a short break and be right back. Welcome back for this wonderful match where generally the Chamudi Vihar Indoor Stadium gets completely packed up. And we are heading into that second half where the Hampi Heroes have just made a comeback with Gagan Gowda's super raids. Yes, of course, the first raid he was tackled out. And then Ritik had his own problems in the cover. And Narsimha, the coach, said, no, listen, guys, I gave you the opportunity. You did not achieve anything out of it. Let me go back to my trusted people. And he's taken off Sukesh Kulal as well. Sukesh Kulal was given that left corner opportunity, and then when Sudarshan is coming, yeah, this double pointer raid brought the Hampi Heroes back there. Madhu Kavirappa just limping away with a little bit of a twist on his ankle, and this super tackle. Yeah, the trusted pair of Shivkumar and Suhas Nagaraj putting it across against Jayasurya Nagarajan. Not easy because he's a very strong lad, Jayasurya Nagarajan. And then the all-out was being saved couple of times by Gagan Gowda because Palani Tuskers won the toss. Mask Mukesh goes in for the raid in the first half. Hand touch, has he got Sudarshan? Yes, he has. Lovely beginning here. Yeah. 1 point, Palani Tuskers. Yes, a lovely beginning. And Mas Mukesh, we heard his interesting story yesterday courtesy of Naveen. And he gets the touch using his left hand completely. And oh man, we can see the defense there. They both, I mean, there's often, whenever the player that gets tackled out, you know, he gets a touch point and the other player on his team is always telling something. So that means the Hampi Heroes defense, they have something that's broken within themselves, and they need to fix that if they want to come back strong in this match, Naveen. I think, you know, both the side, the defenders have had a horrid time today. I wonder what has gone wrong. Because you saw what that defense lines of the Palani Tuskers said in the first half, just 2 tackle points. That's it. And only 1 proper super tackle for the Hampi Heroes. And now there's an opportunity. Krishna is a very good lad. He comes in from that Rajasthan side, but settled in Bengaluru, speaks lovely Kannada as well. Good guy to speak about always. And you know what, Ryan, in Kannada there's a lovely, good-looking superstar, I should say, and he resembles one of them. You know, he's a very close friend of mine as well. And we call him, of course, that is how he's been also addressed many a times. We call him Doodh Peda. Doodh Peda is a sweets name. And my mentor, his mentor, the great director, Mr. Yogaraj Bhatt, a big name in Kannada, they actually named him. Look at that. Krishna looks exactly like Doodh Peda. And everybody who can relate to Doodh Peda can know what I'm talking about. Doodh Peda Digant. He looks like Digant. That's what I told him always.
It's a do-or-die raid now, Ryan. All yours for the Gagan Gowda's raid. Can he get points? Yes, Gagan Gowda, courtesy do-or-die raid. He goes, kicks, and can he get a couple of more points? This is what he's been doing, scoring in twos. Yes, a couple more points for Gagan Gowda. And Naveen, looking at Gagan Gowda's height, I think he's a basketball player because basketball, you shoot, you get 2 points for a normal shot, and this guy's just getting 2 points all the time. You're almost there, but you do not get that three-pointer outside the shooting circle because he used to play volleyball before, not basketball. Hang on, Ryan. Fair. I know you're trying to push FIBA everywhere, as you being a basketball player. I loved your DP, by the way, on your WhatsApp. That's really nice. I hope that's you. Is that you in your DP? Yes, that is very much me. We have Jasurya in do-or-die raid. Oh no. Rider out of bound. Okay. Right out. 1 point. Hampi Correct. Heroes. Very good decision by Jai Kumar because without a touch, Jasurya went into the lobby. And I wonder what was Udpeda thinking. He just ran in. He just slid inside the lobby. Oh no, Jasurya. You were there not getting into the lobby, but you just kept your left hand inside the lobby. Oh, so unlucky, so unlucky. Gagan Glorious Gowda now will escape that double ankle load attempt from Ajay Muthaiya. Rider Can you hear the 1 arena point. once again, Hampi Brian? Heroes. Jersey number 2 out. Yes, all throughout, a lot of voice resonating and a lot of Timeout, athletes in the Hampi crowd as well, as we can see. And a timeout has been called, an important timeout. Let's listen to the coaches. Yeah, first Narsimha leading. ಅಂದರೆ ಬೋನಸ್ 15 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಡಿಸಿ ಬೋನಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡ ಈಗ ಬೋನಸ್ छोड़ 15 सेकंड के बाद में कैश करना See, sometimes to Krishna, he has to be explained in Hindi. He comes from that Rajasthan side, as I said. But he speaks lovely Kannada, but Narsimha always makes it a point to tell him in Hindi, saying, you need to give him the bonus. We need the all-out, guys. Come on. That's what we need. Yeah, Sukesh Kulal is back in that left corner position. And he has been attacked by Mask Mukesh. Lovely running and ಬೋನಸ್ touch. ಪ್ಲಸ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ Palani Why Tuskers. did Jersey number 4 out. Narsimha not stick on with Sudarshan? Yeah, see. Narsimha should have stick on with Substitution, Palani Sudarshan. Tuskers. Sukesh Kulal. Jersey number 55 He's been out of in, form, Ryan. 11 out. Right. Yeah, Naveen, and the worst part is it's a bonus +1 and the game is tight. Just when Hampi Heroes took the lead, they could have put the all out. The pressure was all on the Palani Tuskers. The Hampi Heroes itself called that timeout, which means they were the ones with the strategy. But no, please, Gagan Gowda is here. 14 plus 2. That's going to be 16 points for Gagan Gowda here, Naveen. A one-man show, literally. Bro, this is just ultimate stuff from the glorious Raider. He gets the kick and then Tamilarasan says, hang on, don't come in. Substitution. And the moment he Palani goes for the Tuskers. ankle hold, he gets 11 2 in, points and 1 inflicts out. the all out. As Virdhala Viswanathan loses his place, he's been sent back on that bench and Gagan Gowda now becomes officially the top Raider of the summer edition. Ritik, what were you trying to do? Rider shape. Sukesh 2 Kulal point. and Ritik. Hampi Heroes. Jersey number They've 4 been and 2 out. very, very bad combo. Left corner and right cover not working out today. Yes, definitely not. And this game, this is the reason as to why we all said even yesterday this is going to be the match to watch. The Palani Tuskers also, you know, the moment they went down 4, they immediately came back. The Hampi Heroes, whenever they were down by 4 or 5 points, they also came back. And cracker is what we have here as Teja Nayak steps in for the Hampi Heroes. The bonus is on for him, and it doesn't look like he will be going for the bonus, not getting any point. The score is 21-23, and I'm happy with the score because those are my 2 jersey numbers, Naveen. Yeah, very much. And the only factor now is the defensive wolves. That is going wrong for the Hampi Heroes. Almost there 1 for point. Mukesh Palani Kannan. Tuskers. Why? Jersey number 6 out of ball. Sudarshan cannot hold himself back. Right. Went outside the end line. Oh, that's honestly very unfortunate. And Gagan Gowda here,
he's been that guy compensating for all those errors made by the Hampi heroes. Every time we discuss an error done by Hampi heroes, Gagan Gowda goes in, gets 1 point for his raid, and he gets another point for that error that was done previously. point, However, it's good to see him going for the bonus and playing smart. That's a smart raider right there, Naveen. Very much. And today sees 16 raid points. And with that bonus, I think he's got 17. He might be the first raider in the summer edition to get a double Super 10. Because we were having a 30-minute game before this booster round. Come on, go for it, Suhas. What are you trying? Oh, Gagan goal. Right out. He lifts 1 point, Mukesh Hampi Kannan in his arms. With the height Gagan has got. Just look at that. That looked very funny, Mukesh. I'm sorry, my friend. Look at this. I agree with you, Naveen, and all of us are laughing, and the coach had the most typical reaction a coach would have. The coach is still angry with the fact that the defender did not go in earlier on, and that was a very glorious moment. Oh my God! Take that! Raid number 18. Leadership. Tamil 1 Arasan. point. Hampi heroes. Jersey Hang number on, 33 Tamil Arasan out. is a very good raider. I know you've been a very good defender on that left corner. You know when to go for the ankle hold. But I'm Time sure out. Tamil Palani Arasan... Tuskers. Hey, you know what? Tamil Arasan is playing against Gagan Gowda for the first time. That is the problem. Yes, Ryan. Let's listen to Divakar. ஆட முடியல இல்ல மாத்திக்கலாம்டா சப்ஜெக்ட் நான் சொல்றேன் ஒவ்வொரு போனஸை போட்டு வாங்கடா பாயிண்ட் ஏண்டா ஈச் பாயிண்ட் வந்து மறுபடியும் 4 பாயிண்ட் போடு ஒண்ணும் இல்ல பிரஷர் இல்லாம ஒவ்வொரு போனஸ் கார்டு Armiana Moli, Armiana Yosanai. Right, you know what he said? He just said, don't worry guys, come on, go for it. Just take 1 bonus point. It's just 5 points difference. And he's asked Jayasurya, if you're not feeling okay, I will substitute you. I have Jet Pashupati in the line waiting to raid. Ah, Krishna. Why? 1 point. On the Palani ankle Tuskers. hold. Jersey number 14 out. He was just faking the bonus, Ryan. He was not going for it. Right. Yeah, he wanted the bonus. However, he got a point and a man reduced for the Hampi heroes. Palani Tuskers as the team trailing for majority of the second half. The Hampi heroes come back strong. But the thing is, which team is going to hold it out for the next 11 minutes? Because both the teams are very strong. And I'm sure one of the teams, if an all-out can be inflicted, that could be the differentiating factor between these two teams, Naveen. See now, until now, I should say, with almost 30 minutes passed in this match, 29 minutes to be precise with my weak mathematics. If the defenders can actually raise up to the occasion, it's all been the Raiders' game from both sides. The defenders, yes, they are facing it very tough. Ah, Sukesh Kulal! The moment I say defenders raise up to the occasion, 1 point. the Hampi Udupi heroes. lad, the Kumbhar clan, the pottery-making clan of Sukesh Kulal raises up to the occasion. Kulal means Kumbhar, Ran, in Right. Tulu. And is that clan which comes in from the family of pottery makers. Another interesting fact there, Naveen, as Sudarshan is the new raider for the Hampi heroes. Yeah. And Naveen, since you're there, you're experiencing a lot of, you're conversing with a lot of players. I asked a similar question to Harshit as well. We have a few players who've been playing the Yuva Kabaddi series, and we have a few of them. Hang on. First of all, did Harshit answer you convincingly? Tell me that Leadership. first. Bonus plus 1 point. Palani Tuskers. This was Jersey not a number 2 convincing out. dash. Bonus plus 1, Nagraj. You be very honest here, Ran. Did Harshit answer you convincingly? Yeah, well, he gave his answer convincingly, and I do accept his answer. But I'm putting out a panel discussion here where I have the second panelist, Mr. Naveen Shawri. Right. Yeah, do what I read after this. Come on, Ran. Gagan Gowda here, do or die raid. He's excelled in every do or die raid, and I'm sure he's likely to excel in this one as well. And he's trying the bonus multiple times in this raid. He has 10 seconds. I'm hoping he got the bonus. Oh no, he's going to get tackled out this time. 1 Gagan point, Gowda Hampi is finally going to go back to the Palani bench. Tuskers. And the girls don't like it. You see that reaction? She was angry with Tamil Arasan. No bonus point. 3 attempts on the bonus. Look at that back hold. I'll tell you what. This is a marvelous change that Tamil Arasan has brought in his game. He tried the ankle hold like 3-4 times against Gagan Gowda. He was unsuccessful, and then he goes for the back hold. And yeah,
being a very big admirer of Suresh Nada, Surinder Nada. You know, Tamil Arasan is an admirer of Surinder Nada, so yeah, he's made him proud nevertheless. Yeah, bring it on. Now, the reason I asked, did Arshit answer you, because I wanted to know that if he's come out of the politically right zone. And you also, right? You also answered me politically right. Said, yeah, he gave his point, that this, you mixed your words. Yeah, well, nevertheless, what's the question? Yeah, the question being, in the Bonus Yuva point, Kabaddi Hampi. series, summer edition, we have a few players who are recurring. They've been part of YKS before, and now we have a lot of amateur players who are playing YKS for the first time. So, how do you see the experienced YKS players being mentors to the amateur YKS players, Naveen? Brilliant point. Kick attempted on Sudarshan. Why? Jayasuriya Nagarajan, you know Right what? down. Sudarshan was not a 1 raider. point. You did not have to Hampi. go in so deep. And the left corner and the right corner came across in a right time. Yeah, Jayasuriya struggling today. And Sukesh Kulal, yeah, lovely work along with Teja Nayak and Suhas Nagaraj. Okay, let me give you a very clear and a live example. Say for example, you just pick up from the Palani Tuskers. Okay, in the Palani Tuskers side, Sanjeevi is that captain who played Yuva Kabaddi series before. And of course, he's gone back home for a few personal works. He'll come back soon. That is one lovely mentoring that I saw in the summer edition, where even Ram Kumar played the previous edition, right? So they are chugging along nicely with new faces like Tamil Arasan, say Ajay Mutaya, Ayanathan Ranganathan, Sukesh Kulla in the second half. Right out. He's been 1 lethal. point. That's his third Hampi. tackle point. Brilliant work. And the pottery guy is Strategy making time a out. mockery here of the raiding of the Palani Tuskers. A mockery indeed. This is big performance from the defender there, and we will now get to listen to what the coaches have to say in this very important strategic time. ஸ்கோர் பண்ணி கொடுப்பான். டேய் இழுத்து ஆடு. இப்போ வாட வேணாம். நான் சொல்லும்போது 6 பேர்ல போனஸ் மட்டும் ட்ரை பண்ணி பாரு. அவனை மாத்திக்கலாம் கொஞ்ச நேரத்துல. ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் எடுத்து கொடுங்க. டிஃபென்ஸ் டார்கெட் போயிட்டு உடனே வா. போனஸ் ட்ரை பண்ணி கிடைக்கலனா வந்துரு. உடனே பாது ஒரு 20 செகண்ட் தான். டக்குன்னு வாங்கில பிடிக்க மாட்டாங்க, ஒண்ணும் பிடிக்க மாட்டாங்க. அவாய்ட் தான் பண்ணுவாங்க. What is Narsimha saying? He just wanted to, yeah. 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಆರಾಮಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಬೋನಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Nice. Ryan, I'm sure living with the Kannadigas and in Bengaluru for so many years, you need to decode what Narsimha said. I will tell you what Divakaran said. Yeah, well, Narsimha sir said that we have a 4-point lead. Let's just chill and play, and you can let go of the bonus point as well. Brilliant. Yeah, see, a Malayali guy understanding Kannada, that makes Kannada the most easiest of the Dravidian languages to talk. Right. Yeah, very much Kannada is like one of the most beautiful languages, and I might not be as fluent when it comes to being a pure Kannadiga who speaks that language fluently, but I can read, write, and I can speak moderate enough to reach home by getting an auto. Yeah. And I think that's sufficient, right? What has gone into Sukesh Kulal? 1 point, Hampi. I was just threatening him with saying your place might be taken away by Sudarshan, and from that time on in the second half, he's been a very good defender. He's changed things around. Lovely back hold. And Mukesh Kannan did not have any idea. He first went in for the thighs and then converted into the ankle holds. All right, Teja Nayak comes in for a do-or-die, and you know what Divakaran said? He just said, go in, get me 1 point. 1 point and I will substitute. Oh, he missed out. He just lost his footing, but he still wants to struggle. No, Teja. That's okay. Right He's out. surrounded. Yeah, 1 that girl is point. not happy. Palani Tuskers. And the number of teeth is fallen in front of her mouth. Look at that. All the upper teeth is fallen. And she enjoys the game of Kabaddi. Jersey number 2, neck holding. Yellow card. This is a very exciting moment, and technical Naveen, point. what you said earlier Hampi. on about both the teams' defense being the key factor as we head into the last minutes of the game, that's Coach, so coach, true. coach. You can see how the defense has given Hampi Heroes a lot Hampi of Heroes. points,
Coach, and the Palani green card. Tuskers getting, and Argument. the coach Palani has been Tuskers given coach, green a card. green card. No argument. Please. Okay. Jay Kumar is a Tamilian. Substitution, Divakaran is a Hampi Tamilian. heroes. Jay Palani Kumar got Tuskers. confused Listen, thinking number that's 16. Hampi heroes. 10 And now. Divakaran corrected him out saying, hello, listen, I am Palani Tuskers coach. And this is what he was trying to say. 1 point and I will bring Jet Pasupati on the mat. That is what has happened. Jay Surya Nagarajan has been substituted out. I wonder why. I think he was not feeling okay today. He was looking little lackluster. And Jet Pasupati comes in a moment where Palani Tuskers actually need a lot of rate points. And the defense of Hampi Heroes has risen to the occasion. This time, Ritik. Wait, guys, wait. Let the decision come in. Sukesh, hang on. Respect the referee's decision first. Now talk. Now go out there and talk. Yeah, that's it. That's what even Jay Kumar says. One review. Rider. And the review is, has Ritik gone off the lobby? Hampi Heroes, please come. What was you? At least the last angle visible, it seemed like it was fine. Hampi Hero challenge is red out. Our decision, 1 point each. Please review. Please review, says Amar Verma. And this angle of the review angle also has been shot by Karthik, who's just standing on top of the shacks. Let's see what Ritik does. And what was Sukesh Kullal doing? As a defender, he should hold on to the legs of Ritik, isn't it? He was standing there and clapping hands, saying, no, Ritik, you have not gone out. Come on. You need to hold the ankles of your fellow defender. That's a very zoomed in angle. Yeah, this angle. This is the angle that is coming in. Yeah, there we go. Karthik Kamtu, who's celebrating his birth anniversary, the marriage anniversary with, of course, his beloved wife, Mrs. Revdi. And I want to ask Karthik, of course, he's listening to me. At your place, Karthik, if there is a review decision against your wife, who wins the review? Will there be an option of a review? What do you think, Ryan? I mean, I can't speak of experience, but I don't think there will be an option. There won't be an option. You can't take a review against your wife, Karthik. Sorry. You can just celebrate your marriage anniversary today. No decisions will be reviewed. Just imagine. At the house, when there's a discussion that's happening and when a husband or a wife does not agree with something, and the husband says, I need a review for this decision. Who is the TV umpire? The in-laws? The kids? Who? It's the wife only, you know. Absolutely right. 100 on 100 Rand. You're eligible to get into married life very soon. And you will have a very, very successful marriage life. Red out. A review successful. Red Arat. Return your review. As Rambir. Try பண்ணுங்க. ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಈ ಲೋನ ಒಂದೊಂದೇ ತೊಗೊಂಡು 3 ನಿಮಿಷ ಆಗೋದು 3 ನಿಮಿಷ ಆಗೋದು ಮಾಡು ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಆಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ Okay, he says the Raiders to waste time. Hello, girls, hang on. He's not even scored a point. He's just entering the opposition squad. And there's a noise in the arena. That is what Gagan Glorious Gowda brings to us. A wonderful lad. You know what? He's with such a tall height. He's just, I think, half inch taller than me, Rand. I think because of his leaner structure. He's got another point on Tamilarasan, is it? No, he's not. Comes back with an empty rate. Substitution, Palani Tuskers. Please come. Tivakaran Jersey number also 10 in. substitution. Jay 55 Surya out. now has been inducted back in. 10. And even with that height, he's so kiddishly behaved. He's a baby at heart. And this is no baby stuff from Sukesh Right Kullal. out. 1 point, Hampi. And look at her with all the teeth that has been lost. She says, come on, look at her aggression. One review. Yeah, and that's it. That's the big moments when you step up, especially into the last 3 minutes, and it looks like a review will be taken by the Palani Tuskers. I wonder, contesting what? I think bonus maybe. Yeah, I can listen to the lip movement of Amar Verma, not the audio. I saw the lip movement. Right.
because I do a lot of dubbing also here and there, so I know the lip movement said bonus. So they are reviewing for the bonus. Nevertheless, where did he attempt the bonus first? A hand touch. Then he turns around. Oh, Sukesh holds himself back. Oh, is that the occasion? Is that the occasion? Has he landed first in? Oh, Ran, I think he's landing both the feet at the same time for me. Yeah, both the feet hit the ground at the same time. It's quite clear there. Yeah. And a good attempt there. He just couldn't time those Captain, you two can tell leg your- coordination properly. And Yeah, that's what it is. That's what Amar Verma says. No review. And Palani Tuskers have no review. Yeah, what a wrong start they have got, Palani Tuskers, in the booster round. There, he's landing both the feet at the same time. He should have landed his landing foot first and the trailing foot should have been in the air. Yeah, that is Gagan Goddard entering. You don't even have to see the frame. 18 trade points. Come on, Glorious. Can you get to that double Super 10? And he's just been spectacular today, and it's been joyful to just watch him raid, you know, more than his dominance when it comes to raiding, just watching him raid, the way he executes his entire raid, the way he moves and the way he starts his movements. First he goes on to one side, switches to the other side, gets points. It's just great, and I'm sure the crowd would agree with me on that one. As the Palani Tuskers, looks like they're forcing the Hampi Heroes for the duo dive. That is the $1 million expression on Suhas Nagaraj's face. He did not count the raids and he just thought that was the second raid and he was foxed. The cameras can capture and make you look so bad on Right air. now, It's a super tackle. 2 point. Palani Suhas Tuskers. Nagaraj did not count it. If we can go back to the replay of the entry when he was entering, not here. Yeah, it's a very good double thigh hold nevertheless from Right. Purushothaman Palani Vale. The moment he entered and the referee shouted do or die raid, Ram Kumar couldn't turn the pages Right, around. 2 Ritik point. Palani misses Tuskers. out. 2 more Section points to number Ram. 2, 6 out. My goodness, are the Hampi Heroes giving it away? This is 4 points across 2 raids that is being granted to the Palani Tuskers, and this is not good for the Hampi Heroes because you can't underestimate a team like the Tuskers that can just score points like this. It's a 2-point affair right now, and they are very much in the game. The Hampi Heroes coach told them that 3 minutes is left. We have the lead. Play smart. Ran, just watch that left corner. Just watch Tamlarison. He's not going in with the position of the ankle hold. He's ready for the back hold, and they have done it. They have done it. Right corner, now, Purushothaman 1 Palani point. Vale goes Palani Tuskers. outside the back line. When Gagan Goda is there, it's difficult to tackle him. But with a combination tackle, Substitution. it is Palani possible. Tuskers. Please come. 55 There, in, both the 10 corner out. combination coming along Right. and pinning him down. And that could definitely be the game changer right now in that regard, because they've gotten Hampi Heroes' main scorer, the source of points, out of the mat, and that's a big raid. Oh, take a look at this! What a way to get the lead! If 1 it's 2 point. points, it's going to be the Tuskers, lead. that's the number Okay, 4 out. it's a tie. It's going to be 1 point, which means the Palani Tuskers will tie the game with that. Yeah, Sukesh is not happy. And Jet Pasupati was actually jumping over Sukesh Kulal, and he was also contesting. He had a touch on Krishna. No, there was not a touch, Jet. We'll have Review to come- umpire. Palani Tusker challenge is 2 point. Our decision 1 point. Please The review. review was over on the bonus. I think that was given away as a bonus maybe. Yeah. When Jayasuriya Nagarajan was going in for the bonus point, I think the review was awarded in their favor. But now, has Krishna touched him? That's a big decision that's coming in. Rand, what do you think? No, honestly, I don't see the second touch. I mean, unless it's a particular angle, like, see, that I can't conclusively say whether there was a touch there, but the raider might have felt the second touch, which is why he's calling for it. So, in that regard, yes, he might get the point, but we need to see a conclusive evidence, and I don't see that right now. Correct, very much. Yeah, Pasupati. He comes in from that Kangipuram village where his coach Rajesh actually named him Jet with all that speed that he's got in his legs.
coach Rajesh, his initial coach, he called him Jet Pasupati, and he today has raided like a jet. And see, as I said, Ryan, the defensive errors of Hampi Heroes has allowed the Palani Tuskers to come back into this match, and Gagan Gowda will not be revived. Now, these are not the two people should be standing there. Unsuccessful. 1 point. Palani Tuskers. Unsuccessful. Captain, you are Review no more lost review. by Palani Tuskers now. And only Sukesh will go out. And they need a strong raider. Why was Teja Naik standing there? I wonder why was Teja Naik standing there. Teja was not even in the frame. It should have been Krishna actually. Right. Scores are tied. Teja definitely needs a touch point. Goes for the toe touch first on Ajay Muthiah. Does not get it. Can he go and get a bonus point? Has he? Oh, she says yes it is. Look at her. Oh, get that kid on the mat and allow her to play. Oh, she got a touch point. Oh, marvelous. This is a sensational. Jersey number 2 out. Even with all the teeth that is lost in her mouth, she's not bothered about it. He says bonus. She says bonus. Rider. She said the referee needs a bonus point. Come on, go for it. Touch point on Ajay Muthiah. Hampi Heroes have the review. They can go for it. Umpire, They are going for the Hero review as well. bonus point. Our decision, no bonus. Please review. I mean, we have to give that family of the season award, Naveen. Now I'll tell you what. If Rambir Singh, our TV umpire, likes that girl on the stands who was urging the referees to give the bonus. She said bonus, bonus. So just imagine she knows the rule of the bonus. She knows it. She's hardly what? I mean, 9 years old, 10 years old, max 8 years, 9 years old. That's it, she is. She's lost all her milk tooth in the front. Oh, amazing. And Ajay Muthiah. Review unsuccessful, no bonus, only 1 point. No bonus, only 1 point. What is that girl saying? What is that girl saying? I think, she's angry. She is angry. Come on. Oh, she's gonna have a wonderful day tomorrow at school. You know, I'm sure a lot of her friends will go to her and be like, "Yo, I saw you on fan code." As Pasupati, Jet Pasupati, as we say, has come in. Can the Jet get a point? Can the Jet get the lead or possibly even tie the game? Because it's 14 seconds, which means we might have another raid after this. Jet has to get it in order to. The defense should hold it back. Suhas Nagaraj escapes. 5 seconds, 6 seconds. If it's a super dangle, oh no! Hand touch, he claims. 1 On point. Krishna, Palani he's got Tuskers. it. Jet, Jersey number 12 with now. all the fuel that is left in his tank, runs around and he's got Teja Naik. He's not got Krishna though. He's got a raider. Oh, he's got a raider out. Can Narsimha substitute somebody out? Can he send in a raider? Oh, she can't believe what's happening. It's 35 all. Where is your teeth, my dear? Where is your teeth? Suhas Nagaraj is going in. No substitution here from Narsimha, the coach. He has to get a bonus. He has to get a touch point. There, look at her. She's more energetic than me. She says go for the touch point. Suhas, what are you waiting for? Don't settle for a draw. Don't settle for a tie. But no, that is a tie. And she's unhappy. Oh my! Look at her face. And same expressions with me, Ryan. As my heart says, her face also says the same thing. Narsimha is all words. He's just not happy with the team, which should have won the match. They have surrendered for a tie. And this is the second tie. What is up with Palani Tuskers and Hampi Heroes? Every time they meet against each other, they end up in a tie match. Yeah, I mean, that shows the magnitude of this matchup, you know. We all expected something like this, and I'm sure we did want, I'm sure everybody here wanted one of the teams to win, and we wanted that last raid to be a lot more interesting. But yes, Suhas playing it safe, we can say that, because even if he went in, or even if he forced the bonus and gave away the tackle point, it would have still been a tie game. So a lot to look after over there, but we can take a look at the highlights right now and enjoy this game, Naveen. Yeah, absolutely. Enjoyed on both the sides. I think, you know what, nothing given, nothing taken away. But for the Palani Tuskers, this was a funny moment though. But for the Palani Tuskers, yes, they don't lose another match in the booster round, but they tie another match with Hampi Heroes. This is their second tie, and that has come against the Hampi Heroes the second time. And Tamil Arison was very good. He changed his strategies against Gagan Gowda.
He did not go for the ankle hold. He went for the back holds and he was successful. And at the wrong time, at the very wrong time, Gagan Gowda was tackled out with the combination efforts of Purushothaman Palanivel and of course Tamil Arasan. Not this one. Well, we'll just see that. And this was a lovely dash from Hrithik as Jet was being dashed out. Jayasuriya today looked completely out of color. And so as Nagraj in a super tackle did not understand that it was a do-or-die raid. He was perplexed. He was confused at this raid. This tackle where first Purushothaman Palanivel came in and then the left corner came in. Tamil Arasan and Jet once again made sure why he is called Jet. He targeted the raider there, Ryan, and after that Suhas Nagraj went in for a settling of a tie where that girl also was not happy in the arena, and I am also completely not happy with Hampi Heroes. They should have won it, Ryan. They've surrendered for a tie. Yeah, surrender is the right word to use because they literally gave it away, and that's why the coach was so furious as well because they were well settled on the lead. Take a look at this, the raid points, Palani Tuskers going 4 up over there, and tackle points in favor of the Hampi Heroes 10-7. And all out, Hampi Heroes inflicted, they got a couple of points there. Yeah. The extras, both the teams giving away extras, and Palani Tuskers with 3 and a super raid for the Hampi Heroes. Not to forget the 2 super tackles that came from both the ends, Naveen. Correct. Sukesh Kulal becomes the best defender there, correction. And with 21 points, 18 points were scored by Gagan Glorious Gowda. That shows no support from Shashank today. But nevertheless, from 2 minutes from now on in, Aravali Arrows against the Chola Veerans. That's a big match coming up. Thank you so much, Ryan. It was, as always, wonderful with you in the commentary box. See you soon, live and exclusive on Fan Code. जस्ट पलक झपका योर आर्म हम आप सभी के साथ पुनः जुड़ चुके हैं हैशटैग नॉनस्टॉप युवा मैच नंबर 73 Aravali Arrows versus Chola Veerans. So without a further ado, here we are inviting both the teams on the mat. So let's invite first in the captaincy of Chetan Chaudhary. They are ready. Aravali Arrows. And now the time to invite the powerful from the Tamil Nadu and Puducherry, Chola Veerans. क्या मजा है, क्या अद्भुतता है। पिछला मुकाबला क्या शानदार अंदाज में हम सभी को नजर आया है। बहुत ही अच्छा मुकाबला था जहां पर पलनी टस्कर्स अच्छा खेला, हम्पी हीरोज अच्छा खेला, टाई पर वो मुकाबला समाप्त है। बट अभी आइए नए मैच में आप सभी का नया स्वागत करते हैं। ये मुकाबला है मैच नंबर 73 अरावली एरोज बनाम चोला वीरंस। आइए सबसे पहले अरावली एरोज की शुरुआती सात की बात करते हैं। ब्रजपाल सिंह गौर, चेतन चौधरी, आफ्ताब खान, साहिल होंगे, रोहित बेनीवाल होंगे, अंकित जाट, हरिओम चौधरी, यानी कि अभी भी स्टार्टिंग 7 में राजेंद्र बाकर को मिस करेंगे। देव गुजर, नवप्रीत, सोनू, रोहित और प्रदीप यहां पर स्टार्टिंग 7 में आने का मौका बना सकते हैं अगर इनकी जरूरत पड़ेगी। बट आइए अरावली एरोज की आपने बात की तो बात करेंगे हम चोला वीरंस की। क्या चोला वीरंस की टीम पूरी तरह से है तैयार, है बेकरार इस मैच को भी अपने एक जीत की तरफ प्रस्थान करने के लिए। मोहनदास, गौतम मुर्गन, प्रवीण कुमार आयनर वहां पर होंगे, राजशेखर राजेंद्रन होंगे, अरुण कुमार अंजापुली यहां पर। ये खिलाड़ी क्या अपनी टीम के लिए कमाल कर सकते हैं, 10 सालों कबड्डी का अनुभव काम आएगा। महेंद्र प्रसाद होंगे, एनियनन होंगे और अय्यप्पन को अगर मौका मिलेगा तो वो आ सकते हैं। तमिलवनन होंगे, मनोगर, विघ्नेश और विघ्नेश मुरुगेसन वहां पर मौजूद होंगे। और मेरे साथ कॉम्बॉक्स में मौजूद है नवनीत, स्वागत है आपका।
और चलिए नवनीत जब तक हमारे साथ जुड़ते हैं, आइए आप सभी को बता देते हैं कि टॉस के दौरान क्या हुआ था, कौन जीता था टॉस। जी हाँ, चोला वीरंस ने टॉस जीता, यानी कि पहली रेड जो है अरावली एरोज की रेडर लगाएंगे और शायद वो ब्रजपाल सिंह गौड़ आपको रेड लगाते हुए नजर आएंगे। यहाँ टॉस जीतकर अपने लेफ्ट हैंड साइड का कोड उन्होंने चूज किया है और बड़ी जल्दी हमने जैसा आपसे वादा किया है ना कि हर मुकाबले की बड़ी जल्दीता के साथ हम शुरू करेंगे और इस बार अंकित जाट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस होगी। सबसे खतरनाक डिफेंडर्स में से एक है राइट कॉर्नर, 16 मुकाबलों में 43 टैकल पॉइंट्स, टैकल स्ट्राइक रेट लगभग 47 के आसपास की और ये स्ट्राइक रेट धीरे धीरे और इंप्रूव होगी। बट राजेंद्र बाकर को कहीं नहीं खिलाड़ी लेफ्ट कॉर्नर में जरूर मिस करेगा। प्रेम भडू भी नहीं होंगे इनके साथ, अरुण कुमार अंजापुली जरूर है। 10 साल का कबड्डी का अनुभव, महज ये 7वीं कक्षा में थे जब उन्होंने कबड्डी खेलने की शुरुआत की थी। अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वहां पर खेल कर आए हैं और अच्छा कर रहे हैं, बोनस के साथ साथ टच पॉइंट्स लाते हैं। 11 मुकाबलों में इनके पास 70 रेड पॉइंट्स है, ये अच्छा क्रम दिखलाता है। बट अरावली एरोज की विन प्रतिशत की बात करें तो अभी तक अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला है। 17 मुकाबले 6 जीत 10 हार, एक मुकाबला महज टाई खेला है और कई बार मुकाबले अपने हाथ से इन्होंने स्वयं गंवाए हैं। विन प्रतिशत 35, बट आज कुछ नए खिलाड़ियों को अच्छा करना पड़ेगा। और वहीं चोला वीरंस के लिए बात करें, 5 जीत 15 मुकाबले 10 हार और वो 10 हार लगातार, 9 हार उनमें से लगातार आई थी, फिर एक जीत आई, फिर एक हार, फिर एक जीत। बट अब चाहेगी लगातार जीत की पटरी पर ये टीम पड़ती रहे। दोनों ही टीमों के कोचेस तैयार हैं, हम सभी तैयार हैं, तो किसका करें इंतजार। चलते हैं काउंटडाउन की तरफ। एक बार फिर से हैशटैग नॉन स्टॉप युवा मैच नंबर 73, एक और बड़ा मुकाबला, एक और बड़ा शानदार अंदाज यहाँ पर आप देखेंगे। बट लीजिए अरावली एरोज के हम सोच रहे थे ब्रजपाल सिंह गौड़ शुरू करेंगे, बट यहाँ पर शुरुआत जरूर अरावली एरोज के लिए हुई और पहली रेड में पॉइंट यहाँ पर आता हुआ नजर आया है। अरावली एरोज के लिए कौन गए थे, क्या यहाँ पर साहिल थे, रोहित वहां पर गए और क्या इंडियन वहां पर कर रहे थे लेफ्ट कॉर्नर पर शायद समझते, तब तक वो लेफ्ट फ्लैंक की तरफ गए और पूरी तरह से शिकार बनाया यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर को। अरुण कुमार, इस खिलाड़ी की बात करें तो अरुण कुमार का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है अपनी टीम के लिए जब से आए हैं। जरूर सागर सुजीत के इंजर्ड हो जाने के बाद इस रेडर पर ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, बट इनकी कहानियों के बारे में और वार्तालाप हम करेंगे जैसे जैसे मुकाबला आगे जाएगा। पर ब्रजपाल सिंह गौड़, इनकी भी कहानी कुछ अद्भुत है ना। ये खिलाड़ी बहुत ही डेडिकेटेड है और कबड्डी आप इन्हें कितने समय भी खिला लीजिए, इनके दोस्तों ने बताया, खासकर प्रेम भडू ने, कि ये हर कोई टूर्नामेंट वहां खेलना पसंद करते हैं, चाहे इनका कितना भी बिजी हेक्टिक शेड्यूल क्यों ना हो। ब्रजपाल सिंह गौड़ अच्छा टच पॉइंट के बीच में आता है और टच पॉइंट के साथ अरावली एरोज के खाते में एक और टच पॉइंट जोड़ते हुए अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखा रहे हैं टीम और आप यही देखना चाहेंगे अरावली एरोज से आखिरकार अद्भुत जीत यहाँ पर मिले। 2 अंक के साथ ऑलरेडी टीम है। चोला वीरंस अभी 0 पर है, खाता खोलना शेष बचा है। मोहनदास, विश्व मोहनदास अपनी रेड से अभी तक मोहित करते हुए नजर आए हैं कई सारे दर्शकों को इनकी टीम के। पर चोला वीरंस के लिए ये मैच बहुत जरूरी है और अरावली एरोज के लिए मुकाबला उतना ही जरूरी है क्योंकि पिछले कई समय से ये मुकाबले दोनों ही टीमें परेशानी का सबब बना रहे हैं। मुरुगन गौतम देखिए, मुझे लगता है खतरों का खिलाड़ी है। ये इंजरी रही है लगातार इनके पिछले 2 मैचेस में, कभी लेफ्ट एंकल में रही है, पिछले मैच में नाक पे थोड़ी सी चोट आई थी जहां 2 बार इन्हें लगातार लगी थी इनके नोज पे। बट उसके बावजूद जो इनमें डेडिकेशन है वो बहुत कमाल का है और इस डेडिकेशन की बात करेंगे। बट राजा शेखर राजेंद्रन, ये डेडिकेशन भी है, परफेक्ट एग्जांपल भी है कि कैसे आप अगर राइट कवर अप पे अटैक करें तो आप जंप लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जंप यहाँ पर आई और अच्छा एस्केप किया मिड लाइन के भी बाहर जाते हुए और अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर। यही आवश्यकता है यहाँ पर,
यही आवश्यकता होती है कि आप अच्छा प्रदर्शन करें। बट लीजिए रोहित बेनीवाल अभी तक अपना प्रदर्शन की छाप नहीं छोड़ पाए थे, यहाँ पर छाप ही छोड़ी है। एक अच्छे अंदाज में टो टच भी किया है, मना किया है हालांकि राइट कॉर्नर ने मना किया और रेफरी ने भी यहाँ पर माना कि जी नहीं यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं था। रेफरी रिव्यू चाहते हैं रावली एरोज। इतने शुरुआती क्षणों में ब्रजपाल सिंह गौड़ कभी कभी अति उत्साहित हो जाते हैं। सागर पंचाल ने कहा कि चलिए अगर रिव्यू चाहती है रावली तो उन्हें दिया जाता है रिव्यू। Please come. One touch point. Please go back. Review umpire. Aravali Arrows challenge is 1 touch point. Our decision no touch point. Please review. चलिए टच पॉइंट की मांग है रावली एरोज की। न कोई डू और डाई रेट थी, न कुछ वहां पर तो और गैप दिखा है। मुझे लगता है ये रिव्यू रावली एरोज गवा सकता है क्योंकि यहाँ टो आया पर बीच का वो गैप हम देख सकते हैं। इंडियन पे यहाँ पर हैंड टो टच की मांग की थी और देखिए कितना बड़ा गैप यहाँ से देखने को मिला है, बहुत बड़ा गैप। अच्छा निर्णय यहाँ पर नेकेड आई से जिस तरह से रेफरीज का निर्णय आता है तारीफ करनी पड़ेगी। और रावली एरोज सिर्फ आप एक तरफा भरोसे के साथ अपने खिलाड़ी पर रिव्यू नहीं ले सकते हैं। एज अ कैप्टन जब आपके पास सिर्फ एक ही रिव्यू होता है तो आप ऐसी गलतियां नहीं कर सकते क्योंकि अब आने वाले 36 मिनटों के खेल में आपके पास कोई रिव्यू नहीं होगा रावली एरोज। तो ब्रजपाल सिंह गौड़ इसीलिए हम कहते हैं कभी कभी ज्यादा उत्साहित होना आपके लिए मददगार नहीं होता है। अरुण कुमार अंजापुली लगातार वो रेड पर लगा रहे हैं और अच्छी रेड लगाने की इनमें दमखम है। इनकी कहानी की बात करते हैं आप सभी के साथ तो इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। इनके बड़े भाई भी वहाँ कबड्डी खेलते हैं और अरुण कुमार के बड़ा भाई जिनका शिव नाम है वो भी एक खिलाड़ी है कबड्डी के। बट लीजिए हमने इनके बड़े भाई की बात की है तो यहाँ अरुण कुमार ने शिकार बनाया है साहिल को। एक अच्छी पिछली बार साहिल ने क्लेम किया था कि मैंने टू टच किया, बट इस बार अरुण कुमार ने क्लेम किया उनके ऊपर राइट कवर पर और बहुत सही क्लेम किया, एक अच्छा टच भी किया क्योंकि चेतन चौधरी बाहर थे तो साहिल को वहां पर राइट कॉर्नर खेलना पड़ रहा था। बट दो अच्छे लेफ्ट रेडर हैं रावली एरोज में, ब्रजपाल सिंह गौड़ और साहिल। राइट रेडर कौन हो सकता है उनकी टीम के लिए, बट यहाँ डू और डाई रेड है। और यहाँ देखते हैं ब्रजपाल सिंह गौड़ टो टच की फिर से मांग है। इस बार ब्रजपाल सिंह गौड़ क्या इन्हें टो टच मिलेगा? रेडर आउट दिया गया है। यहां खुश है पी राजा साहब और अभी थोड़ी देर पहले ही पिछली रेड में वहां पर पॉइंट रिव्यू गवाया था। तो ये थोड़ा सा मैं चाहूंगा रावली एरोज से जो खेल है ना वो फेक अटेम्प्ट आप जितना करेंगे ना तो कभी कभार दर्शकों आप सभी ने इसमें कहानी जरूर सुनी होगी ना कि एक शरारती बच्चा था और वो एक गांव में रहता था और वो रोज एक पहाड़ पे जाता था और कहता था कि अरे शेर आया शेर आया शेर आया। तो सब डर जाते थे, सब अपने घर में घुस जाते थे, बट शेर नहीं आता था, वो मजाक करता था। और जब असली में एक बार शेर आया तो उसने सब गाँव वालों को आगे आप मुझे बचाइए शेर आ रहा है, बट सब गांव वालों ने वहां पर मजाक समझा कि चलिए उसकी मजाक करने की आदत है। तो ऐसे ही रावली एरोज को समझना होगा कि फेक अटेम्प्ट्स आप कबड्डी में न करें, अन्यथा रेफरीज के मन में वो बात बन जाती है कि अक्सर ये खिलाड़ी रेफ यहाँ पर फेक अटेम्प्ट करता है, बट यहाँ कोई फेक अटेम्प्ट नहीं होगा। चोला विरंस की डिफेंस के तौर पे अच्छा टैकल किया, रोहित बेनीवाल को शिकार बनाया। एक और लेफ्ट रेडर बाहर जाते हुए 4-2 एक अच्छी यहाँ पर क्रम को बनाते हुए नजर आए हैं। बढ़िया गेम यहाँ पर चल रहा है और बढ़िया गेम को चलाने की आवश्यकता है। सुपर टैकल 2 पॉइंट। यही सुपर टैकल जिसकी आप डिमांड करते हैं, जिसकी आप मांग करते हैं। शानदार सुपर टैकल, जानदार सुपर टैकल, राइट कॉर्नर से आए, दोनों थाइस पर गए, अंक के चार्ट बताते हुए कि ये सबसे टॉप मोस्ट डिफेंडर्स में से एक है अपनी टीम के। और अगर मैं 8 डिफेंडर्स की बात करूं दर्शकों तो राजस्थान के डिफेंडर्स का वहां पर दम कम रहा है, बट अरुण कुमार इंजर्ड हुए। चोला वीरंस हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपके खिलाड़ी, ये भी अच्छा गेस्चर है रावली एरोज के खिलाड़ियों की तरफ से कि वो उनके विपक्षी खिलाड़ियों को बहुत सराहना कर रहे हैं। और पिछले मैच में एज अ गेस्चर जो दिवाकरन साहब ने किया बहुत अच्छा था। वो पलनी टस्कर्स के कोच ने हम्पी हीरोज के रेडर को उठाया और उन्हें पहुंचाया, क्योंकि वो जानते हैं कि खेल है ये और खेल को हम जिस तरह से बयां करेंगे मजा आएगा। अब देखते हैं कि कैसे यहाँ पर कार्य करेंगे खिलाड़ी। अच्छे गेम का प्रदर्शन यहाँ पर आता हुआ
ये मैच बहुत अद्भुतता के साथ चला है आगे। इस बार राजाशेखर राजेंद्रन होंगे, 4-4 का स्कोर बिल्कुल बराबरी पर होगा। यहाँ क्या अंदर जाने का प्रयास करेंगे? जी नहीं, इस बार राजाशेखर राजेंद्र ने ज्यादा प्रयास नहीं किया अंदर जाने का। बट हाँ, काइंड गेस्चर की बात करें तो अंकित जाट का एक बहुत ही अच्छा गेस्चर नजर आया, जहां उन्होंने अरुण कुमार को उठाया और साथ ही साथ उन्हें थोड़ा सा मसला, क्योंकि जहां चोट लगती है वहां पर अगर आप थोड़ा सा मसलते हैं तो जरूर थोड़ा सा पेन कम होता है। और पिछले मैच में दिवाकरन साहब ने जो कार्य किया, बहुत मजा आया उस चीज को देखकर। वो बताता है कि देखिए, आप लड़ाई चाहे कितना भी मैट पर कर लें, पर मैट के बाहर और मैट के अंदर भी आप एक दूसरे के वहां पर भारतीय भाई हैं। मोहनदास जानते हैं कि यहाँ पर जुआ डायरेक्ट आने वाली है रावली एरोस की, इसलिए शायद एक सब्स्टिट्यूट करने के लिए भी खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। और कौन होंगे वो? मुझे लगता है कि जर्सी नंबर 78 क्या बाहर जाएंगे? कौन से खिलाड़ी हैं? जी आफ्ताब खान बाहर जाते हुए, कौन अंदर आएंगे? प्रदीप सिंह या फिर कौन है वो खिलाड़ी? लेट्स हैव अ चेक। बट अभी सब्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं किया गया है, क्योंकि आप विद मिनिमम टाइम वहां पर वो सब्स्टिट्यूशन के लिए नहीं जा सकते हैं। डू और डाई, हरिओम चौधरी Bonus point. लेफ्ट Aravali फील्डर के Arrows. तौर पर बोनस चुराने का प्रयास यहां पर किया था। वो बोनस बड़ी जल्दी से दिया गया है हरिओम चौधरी को यहां पर। अब राजाशेखर राजेंद्रन, ये भी एक बोनस का मौका होगा। नंबर 81 की तरफ से टाई चेतन चौधरी बताते हुए कि कैसे यहाँ पर मैच को लेकर चला जा सकता है। एक अच्छी टाई वाई यहाँ पर अरावली एरोस के चेतन चौधरी की तरफ से। थोड़ा सा राजाशेखर राजेंद्र भी अब निकल आता हुआ लेग में। यहाँ देखिए टाई वाई थी, पहले एक बार लगा था कि एंकल से बच जाएंगे, पर अच्छा सपोर्ट आया सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस से। और इंजरीज, चोला वीरेंस के कई सारे खिलाड़ियों को हमने इंजर्ड होते हुए देखा है। हमने लगातार 2 दिन स्ट्रेचर आते हुए देखा मैच पर। एक बार शायद दुर्गेश के लिए आया था, उससे पहले गौतम के लिए आया था, सागर कुमार के लिए आया था। गौतम को कल भी चोट लगी थी थोड़ा सा चेहरे पर हम यही आशा करेंगे चोला वीरेंस, और खतरों के खिलाड़ी है चोला वीरेंस की तरफ से यहाँ पर एम गौतम। हमने देखा है इस खिलाड़ी को कि लॉकडाउन में जब इनके पास ज्यादा कुछ करने को नहीं था और फैमिली सपोर्ट के लिए ये एज एन इलेक्ट्रीशियन वहां पर कार्य करते थे, और दिन का 500 रुपए जब इनके पास काम आता था तो दिन का 500 रुपए लिया करता था एज अ वेज। और वहीं से इन्होंने लगातार डेडिकेटेड हुआ है, और इनको देखने के बाद इनकी शायद बड़ी बहन ने कबड्डी खेलना शुरू किया और वो एक अच्छे स्तर पर कबड्डी खेल रही हैं वो भी। पंजाबी यहाँ पर चोला वीरेंस के विरुद्ध साहिल बागड़ा, इन्होंने पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था अपनी टीम के लिए। साहिल बगारा ने राइट रेडर, ये क्या दोनों साइड से रेड लगा सकते हैं? क्योंकि हमने इन्हें लेफ्ट रेडर के तौर पर देखा था, तो साहिल बगारा क्या दोनों साइड से रेड लगा सकते हैं? बट 5 का हाउस है, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। एम गौतम ने अपनी पोजीशंस को अच्छी तरह से होल्ड करके रखा है, अपने हॉर्सेस को होल्ड करके रखेंगे। नो इशू, ज्यादा अंदर नहीं गए हैं। Time out. Aravali Arrows. इस बार टाइम आउट मांगा गया है अरावली एरोस से। आइए सुनते हैं राजेश गुजर साहब से। तू रुक जा, रेडर है अपने पास, लाएगा ये स्कोर भी, इसको साफ करो इस बार, ये भी फिसल के गिरेंगे। अरे सुनो, हाँ वो है ना लेफ्ट वाला कोर्नर बैक नहीं चल रहा, तू आगे ऊपर चढ़ा के टैग मार दे भर के, खुल के मार, तू तेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा, खुल के रेड ரொம்ப கிட்ட ओके, तो अरावली एरोस के कोच राजेश गुजर साहब ने एक डिफेंडर को कहा है कि खुल के खेल, खुल के डाई मार, तुझे कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। तो जो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है कि चले मैं अच्छा नहीं कर पाया तो कोच क्या बोलेंगे, वो जरूर इनसिक्योरिटी यहाँ पर क्लियर की है अरावली एरोस के कोच ने उनके लिए। पर साहिल बगारा इस बार जुआ डायरेक्ट, इनकी किक अच्छी होती है, इनियन से बचिएगा। लेफ्ट कॉर्नर पर महेंद्र प्रसाद होंगे, कितना अंदर जाने का प्रयास, इनियन की दोनों थाइस पर कार्य आया। एक बहुत अच्छी जंप आई साहिल की तरफ से, और जंप के साथ साथ इनियन को शिकार बनाते हुए नजर आए हैं। एक बहुत अच्छी जंप, उसके बाद तुरंत मिड लाइन की तरफ रश किया। देखिएगा साहिल बगारा का ये शानदार जंप, देखिएगा अच्छा जंप आता हुआ, और इस जंप के साथ एक अच्छा कार्य करते हुए। अगली रेड मोहनदास, डू और डाई रेड, दोनों ही टीमें डू और डाई रेड पर खेल रही हैं। देखते हैं कि क्या डू और डाई रेड में क्या कुछ कर पाएंगे मोहनदास। अरावली एरोस का डिफेंस अच्छा है, लेफ्ट कॉर्नर को कहा था कि तुझे फ्री खेलना है, पर कभी कभी अति छूट भी जब दी जाती है तो गलतियां होने लग जाती है। शायद हरि ओम चौधरी वहां पर थे, 30 नंबर जर्सी, वो गए अच्छा लेफ्ट रेडर की तरफ से, उनके लेफ्ट हैंड साइड पर डाइव लगाना, माफ कीजिएगा टर्न करना, लॉबी का अच्छा इस्तेमाल करना, ये एक परफेक्ट टर्न है। इसके बारे में हमने बहुत सारी वार्तालाप की आप सभी के साथ इन द कॉम बॉक्स।
बट मैं बात कर रहा था यहाँ पर अरुण कुमार अंजापुली की। अरुण कुमार अंजापुली एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, एक बहुत ही अद्भुतता के साथ प्रदर्शन करते हैं और SRM यूनिवर्सिटी से अभी उन्होंने इसी वर्ष खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेला है। 7वीं कक्षा से उन्होंने शुरू किया था यहाँ पर कबड्डी खेलना और इनके जो बिग ब्रदर हैं वो शिव कुमार, उन्हें देखकर इन्होंने कबड्डी खेलना शुरू किया और 10 के आसपास सालों से, यानी कि डबल डिजिट ऑफ इयर्स एक्सपीरियंस है। इतनी उनकी उम्र नहीं है बट फिर भी उनका जो प्रदर्शन है बहुत अच्छा है और एक फिकल खिलाड़ी है, यानी कि बहुत ही चंचल हैं और अपनी थोड़ा सा वहां पर पूरे क्रम को ध्यान में रखते हैं। बट ये मुकाबला अभी तक स्लो पेस चला है, बहुत ज्यादा तेजी यहाँ पर देखने को मिली नहीं है इस मैच में, क्योंकि दोनों ही टीमें डू और डाई रेट पर पिछले कई समय से यहाँ पर खेल रही है। बट अब डू और डाई रेट पर साहिल बगारा न खेलते हुए शायद इस रेड में प्रयास कर सकते हैं। इस बार साहिल बगारा, पिछली बार इंडियन के ऊपर से उन्होंने जंप लगाई थी, इस बार खत्म हो गए एज अ राइट कॉर्नर गए थे अटैक करने, बट साहिल बगारा की चंचलता ने यहाँ पर काम किया और यहाँ पर बतलाते हुए कि कैसे शिकार बना सकते हैं एम गौतम का। बट क्या पहले डैश हो गए थे, क्या पहले बाहर से आए थे, बाहर जाना पड़ेगा और रिव्यू अपना गवा चुकी है यहाँ पर अरावली अरोज। बड़े शुरुआती क्षणों में एक बार फिर से देखते हैं, टो टच का प्रयास आया इन और यहाँ पर राइट कॉर्नर दोनों गए और क्या लॉबी में कोई संपर्क था, पर रिव्यू क्योंकि नहीं था इसी के चलते अरावली एरोज जो थे वहां पर कोई रिव्यू नहीं ले पाए। बट अभी आइए, हमारे पास कहते हैं ना कि 2 आर ऑलवेज आर बेटर देन 1, तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं नवीन इन द कमेंट बॉक्स। स्वागत है नवीन। Thank you so much, Arshid. Mohan Das, which Mohan has been very, very good as a very nice third raider of the team. And just goes back empty-handed, and I'm just very shocked what has gone wrong with the defenders from both the matches, the previous one and even now. The Raiders are trying to get it on their toes and they're trying to get that raid points very early. Brijpal Singh, has he got a touch? Yes, he thinks. He's just diving outside the swimming pool, inside the kabaddi mat. And that was not a diving hand touch, that was more of a falling hand touch. There. Oh, so low. जी काफी नीचे थे इस बार और इस बार अच्छी डाइव यहाँ पर लगाई और चोला वीरन्स की टीम नवीन आज सुबह सुबह जू गए थे चोला वीरन्स और हम्पी हीरोज, जहाँ पर इन्हें काफी पसंद भी आया। और जब हमने गौतम से पूछा कि आपको फेवरेट जानवर आपको कौन लगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे राइनो लगे थे, क्योंकि वो आराम से मस्त बैठे रहते हैं, वो बहुत ही हैवी उनका शरीर। बट यहाँ 2 और डाई रेट थी, राजा शेखर राजेंद्र दूसरी बार इंजर्ड हुए हैं, एंकल्स। Oh my God. I think it's the knee that he's twisted. And it was very interesting to see what that left corner actually went ahead and did. It was very humanly, you know, Chetan Chowdhury, the captain, immediately he went in. He saw, is he okay? First, I think he went for the tackle and then on the knees, he just straightened him up. They've been carried off. There's been a bit of an injury. He's out there. I think he's twisted his knee. बट नवीन पिछले 3 दिन यहाँ पर बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन रहे हैं। इस बार ब्रजपाल सिंह गौड़ बहुत तेजी के साथ जाएंगे और चोला वीरन्स के खास का साथ यहाँ पर अरुण कुमार अंजापुली को भी बीच में एक निकल आया था। गौतम आज फिर से हैं, बिल्कुल खतरों के खिलाड़ी हैं। कल इनके नाक पे चोट लगी, उससे पहले इनके एंकल में चोट थी। बट एक और खिलाड़ी राजशेखर राजेंद्र, कमाल प्लेयर जो है अपनी टीम में वो बाहर गए हैं। 3 பாயிண்ட் தான் நீ என்ன பண்ற பிரஷரை நம்ம மேல ஏத்துற அவங்களுக்கு கொடுங்க நீ இவரே டிஃபென்ஸ் நடக்குது அவசரப்படாதீங்க நான் கேட்ச் அப் பண்ணு இவர் மோகன் தாஸ் பிரவீன் உங்களுக்கு தான் மேட்ச் இது 6 பேர் டிஃபென்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணனும் அவங்கள ஒண்ணு ஒண்ணா இடிக்கணும் ஒண்ணு ஒண்ணா கொண்டு வரணும் போய் சூசைட் ஆடுறாத புரியுதா நான் தேர்ட் ரைட் வந்தா அடியில ஈத்து ஆடு 4 பேர் டிஃபென்ஸ் says just take care of the defense. He's just very clearly said that you know, Praveen Kumar INR, you need to take care of the defense, and Arun Kumar just go in with the raid and first and 2 raids. Let's try and get some points in those raids. Yeah, you just spoke about the last couple of days. Yeah, that has been a little on that lines, and even Madhu Kaverappa just twisting his ankle a bit. The only reverse ankle hold doesn't happen. Plus 1 point. And I think he's got 2 points. Bonus plus 1. Wonderful work. जी हाँ, बोनस प्लस 1 पॉइंट। हरिओम चौधरी, राजेश गुजर साहब ने इन्हें जरूर फ्री हैंड दिया था, रिवर्स साइकिल होल्ड करने का प्रयास किया, बट क्योंकि वहां पर बॉक लाइन की बहुत ज्यादा आगे वो परफेक्ट फ्रेम उनके लिए नहीं था। बट हम एक तरफ प्लेयर्स की बात करें, प्लेयर्स आज कहाँ घूमने गए, बट अगर मैं बात करूँ तो अभी शायद यूटू सागर पंचाल है और आज
हमारे सभी ऑफिशियल्स वो मॉल घूमने गए थे और मॉल में अक्षय देसाई और सागर पंचाल की वाइफ्स को उन्होंने गलती से वीडियो कॉल किया और उसके बाद उनका जो बिल आया वो 12,500 का था। I think that is why Akshay Desai was getting treated by our physio because he had to carry so many bags. Our physio team was treating Akshay Desai. I was wondering, just to show some signals, just to show the decisions on your hand, Akshay, you're getting treated by our physio? No. That is, now I know why he's carried so many bags in his hand. Right. Bridgepal Singh on that do or die raid. Yeah, but speaking about injuries, I'll tell you what, it all depends on the players, how fit they are and what is it happening to them when they're playing. Right. I think he himself has gone into the lobby. Bridgepal himself went into the lobby. Bridgepal, go back. Raider out, that's it. Very, very clear rule. और शायद वो नियम भूल गए थे कि जैसे ही रेडर अगर एक बार लॉबी में चले जाते हैं या कोई भी वहां पर लॉबी में चले जाता है तो वहां पर वो रेड वहीं समाप्त हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, गौतम भी आए थे, बट क्योंकि गौतम जब तक गए थे तब तक वो ऑलरेडी रेड समाप्त हो चली थी। तो 9-9 और नवीन देखिए 18 मिनट 17 मिनट का खेल खेला जा चुका है। दोनों ही टीमें डू और डाई रेड पर खेली है। 9-9 बराबरी पर है। हर मिनट में सिर्फ हमें एक अंक देखने को मिला है। अरुण कुमार अंजापुल इस बार रेड पर होंगे और इनका एक्सपीरियंस 10 साल का कबड्डी में है। इनके बड़े भाई भी कबड्डी में हैं, शिव कुमार उनका नाम है और SRM यूनिवर्सिटी शायद नाम है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी इन्होंने इसी वर्ष खेला है और शायद चेन्नई का है वो यूनिवर्सिटी और बड़ी प्रसिद्ध है स्पोर्ट्स में। Yeah, very much. SRM University is a very, very big place where not just kabaddi, SRM comes in everywhere. Just say in hockey, tennis, football. You can see teams from SRM University participating in every game that is there in the Khelo India games. The university games, right? Mohandas Vishmohan now once again a do or die raid. Very, very low scoring encounter this. The last 10 seconds, pressure, running attack, taken, and he does not go back in time. Chetan Chaudhary. राजेश साहब नाखुश है यहाँ पर। चेतन चौधरी अपने आप को पीछे नहीं घेर पाए और उसके बाद जब पीछे गए तो बहुत ज्यादा वहां पर पीछे चले गए थे और एक अच्छा अंक यहाँ पर आता हुआ मोहनदास के लिए। अच्छा सपोर्ट यहाँ पर अरुण कुमार का कर रहा है खिलाड़ी और अब बताते हुए कि कैसे आपको जानना चाहिए था। बैकट्रेल करने की जगह आप अटैक कर सकते थे, बट यहाँ पर एक खिलाड़ी वो बाहर गए हैं, राधाशेखर बाहर गए हैं क्योंकि इंजर्ड वो हो चुके हैं और एक खिलाड़ी अंदर आए हैं उनके एब्सेंस में। बट अभी 7 का हाउस है और बहुत समय के बाद चोला वीरेंस और रेडर जो हैं अरावली एरोज के पास, उनके पास बोनस का मौका होगा। क्या रोहित बेनीवाल बोनस का ट्राई करेंगे? क्या लेफ्ट कवर प्रवीण पर अटैक कर सकते हैं? मुर्गन गौतम जो कि मिडिल की पोजीशन पर खेल रहे हैं, यहाँ इनकी पोजीशन से टैकल आया बट वो टैकल इतना हेस्टी था कि आसानी से रोहित बेनीवाल निकल गए। Yeah, Rohit. Arun Kumar, he shouldn't have gone for it. He wanted to surprise Rohit from that left in position. Yeah, look at Mohandas. How unhappy he is with his captain. He should not have gone in. Vignesh Babu comes in at 10 all. I think this first half is just shown how it is for the Raiders to go out there and get points. It's the defense of 4. Oh, has he? No. That was very nice and good that Ankit Jat moved away to the right. I'm seeing a little bit of a changed side here for the Aravali Arrows. Hariom Chaudhary coming in, and on that left corner you do not have the regular left corner who always just gives so much importance. Rajendra Parker being left out. Ankit Jat on that right corner. So big changes coming in. And then also, you know, that settlement of the Raiders that you also see. You know, Sahil Bagara, he's been a good revelation. But apart from him, Rohit Beniwal, and then the captaincy change. I think there's lots to discuss with the coach and the captains. जी हाँ, राजेंद्र बाकर, प्रेम बडू टॉप 3 डिफेंडर्स में से एक वहां पर अंकित जाट मौजूद है और बाकी 2 डिफेंडर नहीं और लगातार पिछले 2 मैच से नहीं है नवीन। पिछले 2 मैचेस से हमने राजेंद्र बाकर को नहीं देखा है, ना प्रेम भडू को देखा है, पर पहला हाफ बिल्कुल ब्रेथ टेकिंग रहा है, नेक टू नेक रहा है दोनों ही टीमों के लिए और टैकल पॉइंट्स देखिए 3 एक्स्ट्रास के पॉइंट मिले हैं। ये अच्छी बात रही चोला वीरेंस को, बस सिर्फ 1 टैकल पॉइंट चोला वीरेंस को मिला है, बट इसका मतलब ये भी कि उन्होंने डिफेंस में ज्यादा एडवांस टैकल के लेने गए। रेड पॉइंट बिल्कुल बराबर है, 6-6, 4 टैकल पॉइंट्स अरावली एरोज के पास है। आइए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप सभी के साथ मिलते हैं बड़ी ही जल्द।
और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक और बड़ा मुकाबला नॉट स्टॉप युवा। और ये इन युवा भी ऐसे हैं जिन्हें कोई रोक सकता नहीं है। देखिए कुछ अच्छी जंप्स आपको नजर आई, बट दोनों ही टीमों का डिफेंस, और कहना पड़ेगा कि डिफेंस को इतने पॉइंट्स न भी मिलने के पश्चात जो रेडर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया नहीं है। 6 रेड पॉइंट दोनों ही टीमों को मिले हैं, 4 टैकल पॉइंट्स अरावली एरोज को मिले हैं, 3 एक्स्ट्रास के अंक, यानी कि डू और डाई रेड में एक बार बिना वहां पर टच के ब्रजपाल सिंह गौड़ चले गए थे, जहां पर डू और डाई रेड सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। और अगर हम बाकी बात करें तो एक्स्ट्रास के और सारे पॉइंट्स चोला वीरेंस को मिले हैं, बट अभी ये राजशेखर राजेंद्र की इंजरी होना, हल्का सा शायद नीज में या फिर एंकल्स में ट्विस्ट आना, ये जरूर अच्छे संकेत नहीं है। सिर्फ एक डिफेंस में पॉइंट मिला है, एक बार ब्रजपाल सिंह गौड़ लॉबी में चले गए थे। तो दूसरी हाफ की शुरुआत करते हैं एक बार फिर से आप सभी के साथ इन माय कॉम्बॉक्स, मेरे साथ है नवीन। Thank you, Harshit. I hope the Raiders of the Chola Veerans understand the situation now. And they need to really get those touch points going. Because that's what happened in the previous match as well. Where the defenders of Hampi Heroes actually stood up to the occasion only in the second half. Like that, can the Raiders of Chola Veerans do it? Or if the Aravali Arrows can do it, it should be Sahil. It should only be Sahil Bagara. But apart from him, we have not seen any Raider going out there and inflicting something. P. Raja, and of course, he's got a packed house as all 6 defenders are out there. Rohit Paniwal, what has he brought to the Aravali Arrows setup? I think he's come in, he just played a few matches here and already been trusted. Praveen Kumar Ayanar does not go back in time. Highline defense, left cover. Gets his hand touch, Rohit. और इसी प्लान के साथ भी आए थे, जब वहां पर आए थे तो उन्होंने शुरुआत ही ऐसी की थी। सबसे पहले प्रवीण पर निगाहें बनाई थी और देखिए यहाँ पर सिंगल स्टेप डबल डोज दिया, यहाँ पर सिर्फ सिंगल स्टेप पहले राइट कॉर्नर की तरफ किया और उसके बाद पूरी तरह से एक्सेलरेट करके लेफ्ट कवर की तरफ, और वहां पर प्रवीण को शिकार बनाया। गौतम पूछ रहे थे किस पर टच किया, पर प्रवीण ने उसके पश्चात माना कि हाँ ये टच मेरे ऊपर था। अब मोहनदास विश्व मोहन, ये देखते हैं कि क्या ज्यादा अंदर जाने का प्रयास करेंगे। अरावली एरोज का डिफेंस काफी समय से 5-4-3 पर खेला है, बोनस का मौका दिया नहीं है मोहनदास को या फिर अरुण कुमार को। राजशेखर राजेंद्र के इंजर्ड होने के बाद थोड़ी सी अतिरिक्त जिम्मेदारी मोहनदास और अरुण कुमार पर आई है। Also the bench, you only have Vignesh Babu, and that is why Vignesh Babu has come onto the mat as that third Raider, number 15. Yeah, now he goes in. I hope Rajashekar Rajendran is okay. It's a do or die raid. He twisted his knee very badly. And now this is just climbing the mountain barefooted for Vignesh Babu, because with the defense of 5, you will have to get in very deep. And the moment he goes in deep, Ankit Jat says, right, I'm going to spearhead my hand into your midriff. That's it. Pull him down. जी हाँ, जरूर चोला वीरन्स वहां पर जू गई थी, बट फिर यार अरावली एरोज जानता है कि कैसे हंट किया जाता है। यहाँ पर दोनों थाइज पर गए और ऐसे किया जैसे कि पैंथा किसी के ऊपर वहां पर चपक रहा हो, जिस तरह से शिकार बना रहा हो। अरावली एरोज के एक अच्छा अंक। और अरावली की अगर हम चट्टानों की बात करें तो बहुत मजबूत, हाईएस्ट शानदार रेंज है उनकी, अच्छी पीक है। साहिल वगैरह के पास कोई प्लान नहीं था इस बार, वो सोच रहे थे इधर लॉबी का इस्तेमाल करते हुए निकलूं, जंप करूं, बट मुझे लगता है लॉबी का अगर इस्तेमाल करने जाते तो एक ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता था। He did not turn around. See, right Raider doesn't turn. He wanted to jump above the chain, and how? Not above Gautam. He is very, very strong, even though he is injured. He is an injured lion who can roar every time. So you'll have to just make sure you have an escape route. Now Mohandas, he also had a little bit of an ankle niggle yesterday. Remember, he was just removing his shoes, and then today morning it was all okay. And that's why he is just playing this match and goes back empty-handed. And Arshit, the more important issue for the Aravali Arrows is, that's why I just spoke about Rohit Paniwal. How much can you trust him as a second raider? Because Sahil has shown that what he can bring to the table. And Rohit, has he got that medal? Has he got that responsible head on his shoulders to go out there and revive him? See? He had to go out there and get a touch point, because they're also trailing as well with those raid points. इस बार ज्यादा अंदर जाने की उन्होंने कोशिश की नहीं, और ये पूरे मुकाबला ही ऐसा रहा है कि रेडर्स अक्सर डू और डाई रेड में अटैम्प्ट करते हुए नजर आए। अरुण कुमार बोले सरप्राइज, बिल्कुल ऐसा लगा कि रोमन रेम्स रिंग से बिरकर आए और सरप्राइज दिया हो। शानदार यहाँ पर सरप्राइज पियर।
Yeah, definitely looked like a spear as well, and also that going to the midriff of the double thigh hold. This is what he also did against Vignesh Babu, Ankit Jat. He was surprisingly going ahead with the midriff, and once again puts it out there as Brijpal Singh comes in. Yeah, Brijpal Singh is good. Sahil Bagara and Brijpal Singh. But then when you have that another left raider going in, running and touch on more, and Mahindra Prasad just goes back in time. And when you can go for it, Rohit Beniwal, if nobody is there, it does not have to be the defense who's actually reviving the raiders. The raiders should need to revive your raiders back on the mat. 13-11 रेडर्स को यहाँ पर रिवाइव करना बहुत जरूरी है, बट यहाँ देखते हैं मोहनदास होंगे एक अच्छे लेफ्ट रेडर हैं। अंकित की तरफ ज्यादा वहां पर जाएंगे नहीं, क्योंकि पता है आज अंकित जिस तरह की फॉर्म में है, बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर टैकल्स कर रहे हैं और हरिओम चौधरी की तरफ जाकर उन पे अटैक कर सकते हैं, क्योंकि हरिओम चौधरी बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, अभी तक वैसा प्रदर्शन उनसे नजर नहीं आया है। On the flip side, Arshad, this is good. This is good. On the flip side, that's what I wanted him to do, because every time you saw what has happened, Ankit Jat has gone in for 2 tackles against the right raiders, and Mohan Das can be that one left raider who can attack Ankit Jat on the right corner. He should try and do that more. Do or die raid for Brijpal Singh. Tries the kick on that right corner. Inyanan, Mahindra Prasad. No, Mahindra, that was your fault. You did not have to do it. Gautam was standing right there. He did not go for the dash. And he went in, he was just angry on Gautam. Wonder for what? शायद सपोर्ट चाहते थे, पर देखिए कैसे चेन छोड़कर यहाँ पर आए महेंद्र प्रसाद, पूरी तरह से चेन को छोड़ा और ऐसे यहाँ पर आप टैकल नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसे वहाँ पर डैशेस करने हो तो आपको अच्छी तरह से जाना होता है। बट पिछली बार यहाँ पर अगर हमने इस खिलाड़ी को देखा था एज ए लेफ्ट रेडर, वाइडिंग एंगल्स मोहन दास, ये शायद दोनों तरफ से रेड लगा सकते हैं और पहले की बाकी रेड इन्होंने राइट के तौर पर लगाई है। Whatever that is, that's wrong. That's wrong. Whatever that is, that was wrong. And that is proved. Chetan Chaudhary, right cover, just goes in with the single thigh hold. When he was going on the left side, he was good. He was actually attacking Ankit Jat. And now see, when he changes his direction to be a right raider, loses out. Super tackle on. जी हल्का सा पैर वहां पर स्किट हुआ और चेतन चौधरी ने उस एडवांटेज को लिया। यहाँ देखते हैं सबसे पहले राइट कॉर्नर को शिकार बनाया, उसके पश्चात गौतम आए और गौतम वो पुराने वाले गौतम नहीं नजर आ रहे जो हमें अमूमन नजर आते थे। सिर्फ फ्रंटल ब्लॉक करने की कोशिश की और अच्छा टर्न किया। He should have gone in all out there with the strong spear what Ankit Jat was using. He did not have the angle. He was very far away from the raider. And now there's a substitution that's happened. Vignesh Murugesan comes in. Yeah, that's a very first time that he's coming in. Reverse ankle hold tried from Hariom Chaudhary. He wanted bonus as well. No bonus given, but 2 touch points. Survives the all out. He can't see this, Rajesh. He's just putting his head down. Yeah, reactions. बहुत अच्छा मौका था और देखिए कहाँ कैसे पहले उन्होंने सोचा कि बैकहोल्ड की तरफ जाता हूं, उसके बाद सिंगल थाई पर गए। चेतन चौधरी भी सपोर्ट के लिए आए थे, बट हरिओम चौधरी बिल्कुल भी सेटल डाउन नहीं हो पाए उस लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पर। आज हमने उनसे बहुत सारी गलती देखी है और बिल्कुल चेतन चौधरी को भी वहां पर डांट रहे हैं कि आपको सपोर्ट देखकर आना चाहिए था। बट हरिओम उन्होंने शुरू में कहा था कि आपको जैसे खेलना हो खेलो, मैं आज आपको कुछ नहीं बोलूंगा। बट कभी कभी जब आप एक्स्ट्रा फ्री हैंड किसी डिफेंडर को दे देते हैं तो ऐसे एरर्स होने लग जाते हैं। अब 16-13 क्या सुपर टैकल इनिशिएट कर सकता है झोला वीरंस? यहाँ देखते हैं रोहित बेनीवाल है लेफ्ट रेडर के तौर पर, ज्यादा अंदर नहीं गए। Can you see 2 Vigneshes there? 15 and 1. There are 2 Vigneshes there for the Chola Veerans. It's Vignesh Babu and Vignesh Murugesan. Both of them from the bench today. They have been inducted in because they needed raiders. Both of them raiders. Vignesh Babu and Vignesh Murugesan. Have they ever thought today while they were clicking selfies in the zoo that they'll be raiding today? I don't think so. Because Mohan Das, and of course a big injury update that we'll have to get for what has happened to Rajasekharan. Sahil Bagara, he's impressive. साहिल वगैरह एक अच्छे खिलाड़ी हैं और पिछले मैच में एक अच्छा सुपर 10 बनाया था इस खिलाड़ी ने। यहाँ देखते हैं कि क्या ऑल आउट को इनिशिएट करने की तरफ जाएंगे, क्या 1-2 पॉइंट लेकर आएंगे। प्रवीण की तरफ वहां पर जा रहे हैं और एक अच्छी सोच है
बट विघ्नेश के डैश से बच सकते हैं क्या, क्योंकि विघ्नेश उतने अच्छे डैशेस में हमने देखा नहीं उन्हें। उनके एक दो बार हमने एंकल होल्ड देखे, सिंगल थाई होल्ड देखे, प्रवीण की तरफ जा सकते थे। बट अब विघ्नेश मुरुगेसन यहाँ पर रेड पर हैं और आज इन्हें खेलने का यहाँ पर मौका मिला है। 11 मिनट का समय शेष बचेगा, सब्स्टिट्यूशन किया गया है। विघ्नेश को बाहर बुला रहे हैं, एक अतिरिक्त डिफेंडर शायद जा रहे हैं क्योंकि डू और डाई रेड आ सकती है रावली एरोज की तरफ से। Yeah, Inian, he comes in. Now this is the moment. Brijpal Singh in a super tackle situation. Can Praveen hold it together? Inian, generally a left covered, left corner defender standing up. Come on. He's generally a right corner defender. Stands at the left corner. Not a right one. Not a right one. जी हाँ, ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा हम वहाँ पर डिमांड कर रहे थे और आज इसलिए मैंने उनका इंडियन का नाम लिया था ना कि ये हो सकते थे एक शानदार डिफेंडर, बट अपनी पोजीशन को फिर से बदलाव किया और यहाँ पर निर्णय अभी भी जारी है। कुछ चर्चाएं विमर्श किया जा रहे हैं। सागर पंचाल हैं, अमर वर्मा है और एक और डिफेंडर को बुलाया, एक और वहाँ पर रेफरी को बुलाया गया है। क्या कोई कंटेंशन है? जी नहीं, एक खिलाड़ी बिल्कुल जाएंगे। शायद ये कंफर्म कर रहे थे कि कितने खिलाड़ियों का वहां पर टच है। सिर्फ इंडियन का वहां पर टच था और इंडियन ने वहां पर बाहर जाते हुए यहाँ देखिए कोई आवश्यकता उसकी थी नहीं। शायद इंडियन को लगा था कि इनके खिलाड़ी पर अटैक वहां पर हुआ है, बट वो गलत था। और अब विघ्नेश बाबू हैं, डू और डाई रेड है, गलती नहीं करना चाहेगा रावली एरोज, बट हाँ हरिओम से आप गलती टीज कर सकते हैं उन्हें। राइट कवर पर हेड टच करने की कोशिश की है और नीचे दो खिलाड़ियों की मांग करें। फिर से चोला वीरन ऑल आउट की तरफ था, बट रेफरी क्या मान रहे हैं? जी एक पॉइंट के लिए बिल्कुल माने। And Vignesh Babu wanted 2 points. Let's see what happened. Oh, that is right in and right corner both. And does the Chola Virans have lost the review or what? They should have gone in for the review if they've had it. I think they don't have the review there. Super tackle on. That hooter just went off. It was not a do or die raid. And now Vignesh has the chain with Arun Kumar. Praveen Kumar INR just challenges him and sends him back. Rohit Beniwal. Time out. Chola Viran. और रावली अपना रिव्यू जैसा कि हम बता चुके हैं गवा चुकी है। यहाँ देखते हैं राजेश गुजर साहब क्या कहेंगे। अरे आखिरी आदमी है, बोनस देके पीछे क्यों नहीं हो जाते? क्या क्या मिल जाएगा बोनस रोकने से? 3 पॉइंट दूसरे भी तो मिल रहे हैं यार। डिफेंस को तुम बिल्कुल ही मजाक बना रखा तुम लोगों ने। पूरी टीम दोबारा खड़ी कर दी, सारे प्लेयर एक बार बेंच पे जाके आ गए। डिफेंस रोको। बहुत समय से ऑल आउट करने का मौका है रावली एरोज के पास, पर वो ऑल आउट नहीं कर पा रही है और इसीलिए राजेश गुजर साहब परेशान थे। और अरुण कुमार का रिवाइवल आया है तो मुझे लगता है अरुण कुमार के पास वो डैशिंग प्रदर्शन है जो अपनी टीम को ऑल आउट को और थोड़ी समय के लिए टाल सकते हैं। The only problem with Arun is he's not as speedy as Rajendran. Yeah, there, see? He's lost out a lot of speed. He is generally a very soft guy, a gentle giant who's tall but is not quick enough. Both raiders, Gagan Gowda and Arun, for me looks very similar. Of course, Gagan is a little more taller than Arun, but they need to pick up some speed. Like this. Oh, running at us, that's over speed. Bye-bye, Brijpal on the mat for a while. 2 points given away. सुपर टैकल यहाँ पर हो गए क्योंकि सिर्फ 3 खिलाड़ी थे। यहाँ लग रहा था हैंड टच के लिए जा रहे हैं, बट स्कीइंग करते हुए यहाँ पर नजर आ गए। जरूर मैसूरू में भी वहाँ पर स्नो सिटी है नवीन, वहाँ पर जाकर आप स्कीइंग कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। बट याद देखिए बिल्कुल स्किट करते हुए, जैसे हम बचपन में अक्सर साइकिल होती थी हमारे पास, हम ड्रिफ्ट वहाँ पर कराते थे, बट यहाँ पर वो ड्रिफ्ट गलत अंदाज में हुआ है। और अब सिर्फ 1 पॉइंट की लीड है रावली एरोज के पास। 4-4 खिलाड़ी बराबर दोनों ही टीमों के पास है। अरुण कुमार, अब वो डू और डाई रेड आएगी अगली, तो ये चोला वीरन्स अगर अरुण कुमार जाएंगे लगातार तीसरी रेड के लिए और वो डू और डाई होगी। Can he inflict it and go back soon, Rohit Beniwal? You need to count the number of raids of your opposition as well. He's gone in, and I don't think so he's counted it. He's just gone in. If you really are thinking about inflicting the do or die raid, there is just 2 raiders on the opposition side, and it will be Vignesh Babu. Yes, Arun Kumar Anjapalli won't come in for a do or die raid. And I wanted Rohit Beniwal to go back soon, which he did not. Right, now the action on Hariom Chaudhary. That is my place where I will be getting points.
He's kind of weak in confidence, Vignesh Babu. And what is Aftab Khan doing? Aftab Khan, you'll have to come in for the angle to cut it out. Does not get a hand touch. 8 seconds, 7 seconds. Pressure. Hariom Chaudhary as expected. Don't tell me. He's landed heavily on his left shoulder. He's definitely landed heavily on that left shoulder. What is happening? 2 points. Chola Veerans have got 2 points nevertheless. And that's the lead for the Chola Veerans, but they have lost another raider. And they're going in for a review, saying 3 points. Okay, go back, Aravali Arrows, go back. Let the referees talk. Our physio partner, JSS Sports College, comes in. I think they need some magical spray. Challenge it. Raider shape. 3 points. Our decision 2 points. Please review. जी 2 अंक दिए गए थे, यहाँ 3 की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल हरिओम पर वहां टच था और उसके पश्चात आफ्ताब का सपोर्ट आया, इनकी पोजीशन सपोर्ट आया। नवीन, यही मुझे चिंता थी कि कोई भी प्रॉपर डिफेंडर वहां मौजूद नहीं था। क्या साहिल बगारा भी बाहर गए हैं? ये देखिए इनकी पोजीशन से साहिल बगारा पर क्या हल्का सा पैरों का टच हुआ था। आफ्ताब का जरूर वो टच पूरा है, क्या पैरों से वो टच हुआ था साहिल बगारा पे? Looks like because before Aftab, Sahil Bagara is much closer to Vignesh Babu, and he just landed on that left shoulder. That is why, Harshit, I always keep saying that your lats, that your lats muscles, that needs to be very strong. When you're falling, your shoulder is pressing down and your body is pressing up against your shoulder. That's a problem there, and that is how Durgesh Kumar has also suffered shoulder dislocation. Of course, very strong lad, Durgesh Kumar, but here Vignesh Babu not as strong as Durgesh, but nevertheless he's appealed for 3 points. He's challenged it. I think they will be awarded. It's a very interesting turnaround. If this is 3, now that becomes 19 points for the Chola Veerans. तो पहली वर्तबा यहाँ पर बहुत समय के बाद चोला वीरेंस लीड में आ जाएगी ऐसा। और जो अरावली एरोज लगातार चोला को ऑल आउट करने की कोशिश कर रही थी, अरावली एरोज अब बहुत ही दहलीज पर खड़ी है ऑल आउट के। तो क्या अरावली एरोज एक और कंटिन्यूटी में मुकाबला अपने हाथ से गवा देगी? बट नवीन, ये भी मुकाबला बहुत ही ब्रेथ टेकिंग नेक टू नेक चल रहा है, बट हम कहीं भी मिस कर रहे हैं इस मैच में तो वो लिटिल फैन गर्ल को मिस कर रहे हैं। पिछले मैच में नवीन आउटस्टैंडिंग यहाँ पर जिस तरह से हम सभी को बैफल कर दिया, उन्होंने चौंका दिया। इतनी छोटी लड़की, कबड्डी की इतनी नॉलेज, मुझे लगता है कि अच्छा है वो वहीं पर थी। कमेंट्री बॉक्स में अगर कहीं होती हमारे साथ या फिर मैट पर अगर कहीं होती तो आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, अनइमेजिनेबल एक्सप्लेनेशन होते हैं। 2 points. Chola Veerans. This is also an unimaginable review here that was being taken by the Chola Veerans. They lose the review out, only 2 points. And just watch that once again. Sahil, right, as Rambir Singh thinks that Sahil did not have a touch there. Yeah, nevertheless, yeah, speak about that girl. That shoulder, it's not looking good. That's a 3rd player going down. The Chola Veerans on the defense on the raiding lines. किसको निकालूं? तेरे को निकालूं? राइट साइड कौन खेलता है? फिर लेफ्ट किसको खिलाऊं? देव मार लेगा कैच। लेफ्ट तू खड़ा हो जाएगा ना, तेरे को वापस डाल दूंगा ना मैं। देव को खिला देता हूँ। सुन, पॉइंट की कोशिश करियो, बोनस मार के उसके बाद पॉइंट की कोशिश करियो। पहला फोकस बोनस, ठीक है ना यार? कहाँ की पेनल्टी से रुके नहीं जा रहा डिफेंस से। कोई बात नहीं, तुम संभालो मैच को, भी है तुम्हारे पास टाइम है, मौका भी है, ठीक है ना? मैच को संभालो। तो बोनस के लिए कहा गया है वहां पर। डैडी ने ना पूरा इंडियन वार मारी वंदे उल्ला टाटन करो। बोनस पटाओ, कैट्स आउट। All right, and P. Raja says, if the raider attempts the bonus, give him. Don't go to give him an extra point. He says that's okay. Bonus is okay because Sahil Bagara will want touch points. And can Mahendra Prasad stay back? He's asking everybody to stay back. Gautam, of course, will stay back from the right cover. Should not be going in. Oh, come on! Why? Not necessary, Gautam. And what happened there? He did not come in for the touch. Everybody were playing end-line defense. And suddenly Gautam jumps in. देखिए हल्का सा यहाँ पर गौतम पर यहाँ गए। गौतम ने सोचा कि चलिए मेरे पास मौका है, उन्हें वो गोल्डन शू की तरह नजर आया, वहां पर वो डाइव आ गई और साहिल बगारा की पेस और उनका जो फुटवर्क था उन्होंने काम किया और मिड लाइन की तरफ निकल गए। यहाँ सुपर टैकल का मौका है। क्या अरावली रोज अभी 1 पॉइंट की लीड पर है, पर अरुण कुमार अंजाम बोले चेतन चौधरी से मिस्टेक।
कैप्टन यहाँ आज लगातार मुश्किलात पैदा कर रहे हैं अपने कोच के लिए। राजेश गुर्जर एक बार फिर से नाखुश होंगे। चेतन चौधरी ने पहले भी ये सेम मिस्टेक की थी, इस बार अरुण कुमार ने किक दिखाई बट लगाई नहीं। You know what? I think now Rajesh Gurjar will go back and feel that known devil is better than an unknown god, because he substituted Rajendra Bakar out and he brought in Hariom Chaudhary. That did not work. Prem Badu not there. Chetan Chaudhary comes in. That is also not working. I think they've been reprimanded for all that issues that happened a couple of days ago. Aravali arrows. There's a little bit of a stick that has been given away. But whatever that is, the current setup is not working for the Aravali arrows. As Arun Kumar Anjapuli will want to have that all out. He will love to get the all out, but can he go for it? He should go against Rohit. Wonderful. Rohit Penival, a raider. Arun Kumar Anjapuli goes for the hand touch, gets him. Now last man standing. Gautam comes back. नवीन क्यों यहाँ पर, क्यों दो रेडर्स वहां पर एज ए डिफेंडर मौजूद थे, क्यों यहाँ पर राजेश गुर्जर साहब ने देव गुर्जर को अंदर नहीं बुलाया, और क्यों प्रेम बडू और राजेंद्र भाकर हमें इवन इन द सब्स्टिट्यूट लिस्ट नजर नहीं आ रहे हैं। और जरूर वहां पर आपको नजर आएंगे बड़ी जल्दी, बट 20-20 का स्कोर है, फिर से स्कोर बराबरी पर है। साहिल बगारा ज्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे, बोनस जरूर नहीं मिला है, पूरी तरह से ब्लाइंड आउट हो गए थे, चेक नहीं किया था कहां से कौन डिफेंडर आ रहे हैं। लेफ्ट कॉर्नर से महेंद्र प्रसाद भी आ गए थे, एक अच्छी टाइप प्रवीण आयनार की थी, बोनस जरूर मिला है, पर 3 अंक चोला वीरेंज को मिलेगा, शायद लीड 2 अंकों की हो जाएगी उनके पास। Much needed all out. That is what they were eyeing for. The bonus was given away. Mahendra Prasad, Gautam, everybody comes in with a blinded Sahil Bagara. Lovely work there by the defensive lines, and also it's so interesting that now Arun Kumar Anjapuli should not pull the clutches down. He should keep the accelerator on. Yeah, lovely work. I think he's got the bonus point under the nose of Hariom Chaudhary and Brijpal. Brijpal was just getting his t-shirts and shots ready for the match and for the next raid. I think, yeah, brilliant bonus point by Arun Kumar. तो पुणे अब 3 अंकों की लीड हो चुकी है। टाइम आउट मांगा है अरावली एरोज ने। अंकित जाट 5 से 7 मिनट पहले आउट हुए थे, उसके बाद उनका रिवाइवल नहीं आया, सीधा ऑल आउट होकर आए हैं। गट्टा मारना रेडर की पीठ ले, अरे कौन बोल रहा है गट्टे पे पीठ मार दे, उतर पीठ पे, तू बिल्कुल बैठ गया लाइन, ये बोनस लाइन पे पीठ मार देना, इतना सीधा पीठ देकर बोनस मार रहा है। साहिल पक्की बात, बोनस लेकर आना, देख 3 मिनट है, 3 की लीड है, बोनस तो आना ही चाहिए, पॉइंट की ट्राई करियो फिर। More like a warning there by Rajesh than a timeout. He needs the Raiders to get bonus points. And Mahendra Prasad will be ready against Sahil Bagara. Sweeping toe touch attempted. Bonus. Now Gautam comes in. Strong frontal block. This is the Gautam that we know. Wonderful tackle point. And he loves challenges. या ये वो गौतम है, ये वो जिन्यून गौतम है जिन्हें हम जानते हैं। शानदार यहाँ पर प्रदर्शन आया, उन्हें पता था कि साहिल जो है वो वहां पर बोनस के लिए जाएंगे। गौतम ने राइट कवर से पूरी तरह से एंगल को कट किया, और यहाँ देखिए ये पावर है गौतम की, पूरी तरह से रोका, अच्छा साथ वहां पर आया। और थोड़ा सा यहाँ पर ग्रीन कार्ड दिखाया गया है, ग्रीन कार्ड वहां पर गौतम को दिखाया गया है, थोड़ा सा अग्रेशन था, और उस अग्रेशन के चलते अक्सर पसंद करते हैं गौतम एज ए डिफेंडर। Really? जी हाँ, गौतम पुडुचेरी के एडिशन में भी हमने देखा था, और he spoke about करते हैं। Yeah, he spoke about aggression there, but he's been awarded as for the foul play on the tackle points. Yeah, nevertheless, this is really falling apart now for the Aravali Arrows. Chetan Chaudhary gets the captaincy. Arun Kumar is playing with the time. चेतन चौधरी इज द राइट कॉर्नर डिफेंडर एज यूजुअल। यहाँ राइट कवर खेल रहे, क्योंकि इनके पास कोई राइट कवर है नहीं। बॉक लाइन के इतना आगे से टैकल करना, मैं चाहता हूँ कि गिव अवे बोनस पॉइंट है एक तरीके से ये। और मोहन यहाँ पर बैठे हैं। He's been yellow carded. He's been yellow carded. Rohit Beniwal gets a running hand touch, and P. Raja, he understands the aggression. Gautam is sitting next to Mohan Gowda, the reserve umpire there. Mahendra Prasad goes for the double tie hold, doesn't get it. Why is Arun Kumar going in? तो मैं गिव अवे की बात कर रहा था, यहाँ तो 2 गिव अवे पॉइंट्स यहाँ पर अरावली एरोज को चोला वीनस ने दिए हैं, और वहां पर देखिए नाखुश थे पी राजा, बट अभी भी क्या 1 अंक की लीड है चोला वीनस के पास, 25-26 है। बट मोहन दास विश्व मोहन एम्प्टी रेड लगाएंगे, आज रेड पॉइंट सिर्फ 2 मिले हैं।
और पहला हाफ तो पूरी तरह से डू और डाई रेट पर दोनों ही टीमों ने खेला था, पर बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है और इस शानदार मुकाबले के साथ साथ क्या ये क्रम यूं ही बढ़ेगा? अभी तो एम्प्टी रेट के साथ मोहन वापस अपने खेमे में। I think they will get in Vignesh Murugesan. Substitution. They will get a raider out and put a defender in. 1 in, 15 out. Yeah, P. Raja, that's what he wants. He takes off Vignesh Babu and he puts in Vignesh Murugesan. Yeah, that's what it is. A raider has been substituted out for a defender. Sahil Bagara. He should keep going what he does best. Maximum, Arav Yaros will get 2 raids. Ashrit, that's all. So if he can get a touch point in this, that'd be really nice. And can Praveen hold himself back? He does hold himself back. तो अभी दूसरी रेड शायद चोला वीरेंस की है और मोहनदास शायद इस बार क्या बोनस का प्रयास करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो जो अगली रेड आएगी वो उनके लिए डू और डाई रेड होने वाली है। तो मोहनदास की कितनी क्लेवर, कितनी आइडियलिक परफॉर्मेंस यहाँ दिखाएंगे। वो तेजी के साथ गए हैं, पहले 10-15 सेकंड लिए। क्या राइट कॉर्नर अंकित चाट की तरफ जाएंगे? शानदार स्वीपिंग toe touch, surprising. Yeah, that was a fabulous toe touch. The defender did not agree to it, but Amar Verma does. Wonderful. That was so evident on that right in position. Arun Kumar Anjapuli is just pumped. Look at that. Beautiful toe touch. And look at the reaction from Sahil Bagara. Come on, agree to it. Agree to it. Come on, that's a big toe touch. And on that occasion, now it's 27 for the Chola Veerans. Can they go back quickly and inflict that 2 or die raid? No. 1 point. Dashed away. No, each 1 point. This is each 1 point. Rohit also has to come out, maybe, probably each 1 point. That's what it looks like. Yeah, they will ask the raider and the defender, both of them, to stand out there. Ankit is actually giving away the reaction. Ankit Jat, you can shout out whatever you want, but your real Kabaddi heart has told the reaction. There is completely outside and even a defender comes out. Very simple. It's a very simple decision for Amar Verma. It has to be each 1 point. No teams have the review. They will call in every referee from every corner of the Kabaddi mat. They will get into that conversation. जी हाँ, वार्तालाप यहाँ पर चल रही है और रिव्यू नहीं है रावल एरोज के पास कि हम सभी जानते हैं। और पी राजा साहब भी कहते हुए कि चलिए क्या खिलाड़ी शायद सेल्फ आउट वहां पर हो गए थे, पूरी तरह से वो बाहर चले गए थे। बट यहाँ देखते हैं 27-25 से रोहित ने प्रयास किया था और पिछली जो रेड थी मोहनदास विश्व मोहन की, कहीं ना कहीं उस रेड ने तय किया था इस मुकाबले का निर्णय। बट देखते हैं क्या स्टेशन टाइम सेव 9 कर पाएगा रावल एरोज के लिए। सिर्फ 24 सेकंड का शेष बचेगा। अमर वर्मा साहब, सागर पंजाब साहब थोड़ी सी यहाँ पर वार्तालाप कर रहे हैं। शायद 1 ईच पॉइंट का आखिरकार निर्णय यहाँ पर आ सकता है। बोनस देखिए 5 का हाउस था, क्या बोनस अवेलेबल नहीं था? It's that is not a contention at all. It's not a contention at all on the bonus. And Arav Liaros will cry out for 2 points for sure. 6 खिलाड़ी अगर थे तो फिर हो सकता है बोनस का। Right. But we saw only 5, right, in that raid. If we can. Yeah. I was wondering. I think there is another raider who's probably come in, or a defender who's been revived. Maybe that player has not yet been sent in. Sagar is having a long discussion with Amar Verma. Saying 2 points. Sagar is indicating something. What is the decision by Amar Verma? What is he going to give? This is a match decisive. Bonus plus 2. Super raid. And of course, 1 point as a raider also has been dashed out. So that means it's 2 points. Wait. So now Chola Veerans, can they go for the review? Wait. Yeah, I think Chola Veerans will need to revive this and challenge this and see what's happening. The decision has come in. Right, this is the confusion that we can't afford to have. Amar Verma, before raising your hands and fingers, you need to decide it. Yeah, that's what they are saying, each 1 point. That's what the Chola Veerans are saying. Where was the bonus in content? Can we go to that replay and check out how many defenders actually were there? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दिखना पड़ेगा। यहाँ देखिए, यहाँ 5 पर क्या एक खिलाड़ी जो येलो कार्ड था जिसके पास ये उसका मैटर था। यहाँ खिलाड़ी एक बाहर चले गए थे, यानी कि ये पहले बाहर गए। यहाँ 2 डिफेंडर जिसमें से एक आपको इंडियन पूरी तरह बाहर जाते हुए नजर आएंगे। क्या इसी वजह से बोनस प्लस 2 दिए गए हैं? तो वो क्या येलो कार्ड था, इसी के चलते यहाँ पर बोनस अलाउ था। Yeah, correct. It is with the yellow card. Yes, agreed. But more than all that, it's completely out there, and they will probably stick to that decision. They were asking who's there. No, I think they will recheck on that. Yeah, bonus for sure. Bonus but did plus he? 1 point and Yeah, bonus plus 1.
Yeah, correct. Very correct. Bonus +1 and 1 raider out. So that means it's actually 1 point. But is that a bonus? Now tell me, is that a bonus? He's running on the bonus line. He's running on the bonus line. And I don't see that is a bonus as well. As Gautam was yellow carded, yeah, he will be counted as he's inside the mat. So with 1 point, why is Mohan Das going in so deep? Is that the final correct score? They're playing the block line defense. Can he just cross the block line and come back? He's trying to go over the block line. He's crossed the mid line. Chola Veerans have won this. Fabulous work. Whatever the Aravaliaros were crying and shouting for, Chola Veerans have gone ahead and won their second match of the booster round. शानदार मुकाबला, एक शानदार मैच यहाँ पर आप सभी के समक्ष नजर आया। पहले यहाँ पर पॉक लाइन की बात हम कर रहे थे और पॉक लाइन को तुरंत यहाँ पर पार करते ही एक अच्छा एंकल होल्ड आया था राइट कॉर्नर की तरफ से, पर मोहन दास विश्व मोहन जानते थे अपने हाइट का बहुत अच्छा उस खिलाड़ी ने उपयोग किया और एक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन वहां से आप सभी को नजर आया। अभी भी अंतिम रेड बची है, बट 1 पॉइंट दिया गया है। गौतम ने कहा कि चलिए 1 पॉइंट आप ले जाइए, पर ये मैच के 5 अंक हम लेकर आने वाले हैं। 2 मुकाबले 2 जीत। चोला वीरंस आर ऑन द फायर। मजेदार, अद्भुत, क्या क्रम था, क्या जज्बेदार ये मुकाबला था। मैच नहीं है, असल मायनों में कड़ी परीक्षा थी दोनों ही टीमों के लिए। जिस प्रकार से शिल्पकार जो होता है वो पत्थरों को मार मार के उसे शेप देता है, चोला वीरंस के सुपर टैकल्स ने, थोड़े से अतिरिक्त टैकल पॉइंट्स ने यहाँ पर शिल्पकार की तरह इस मुकाबले को अपने नाम में फ्रेम कर दिया था। शानदार ये मुकाबला था, मजेदार ये मैच था। क्या जीती है चोला वीरंस। दूसरा लगातार मैच इस बार पटक नहीं दिया रावली एरोज को, तो एक और बार जेब से अपना ये मुकाबला गवा दिया रावली एरोज ने। अच्छा मौका था, वो कोशिश थी रोहित की कि चलिए क्या यहाँ पर पहले बोनस मिलेगा, उसके बाद कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। रेफरी का थोड़ी देर तक निर्णय था, बट रावली एरोज ने रिव्यू शुरुआती क्षणों में गवाया था। ब्रजपाल सिंह गौड़ नहीं दिखे आपको उस तरह की फॉर्म में। अंकित जाट शुरुआती क्षणों के पश्चात सेकंड हाफ में उतने अच्छे फॉर्म में नहीं दिखे। मोहनदास विश्व मोहन यहाँ पर अच्छी रेत उन्होंने लगाई और पूरी तरह से मैच को अपने क्रम में वहां पर घोषित किया था। मजा था, अद्भुतता थी और एक अच्छी डाइव यहाँ पर नजर आई। दोनों थाइस पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर डाइव नजर आई थे अंकित जाट की। अच्छी तरह से इस मैच को लेकर गए थे, फ्रेम अप करते हुए नजर आए थे। बहुत ही बढ़िया ये मैच चला था। और इस मुकाबले के अगर आप ओवरऑल पॉइंट्स की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर इस मैच में कहीं ना कहीं चोला वीरंस के लिए जो थे 2 पॉइंट महेंद्र प्रसाद ने मिले, 2 पॉइंट गौतम मुर्गन को डिफेंस में मिले, सिर्फ 5 अंक डिफेंस में मिले। रेडर्स ने इनके हर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा किया, हर रेडर ने बहुत अच्छा किया। अंकित जाट बहुत अच्छा खेले डिफेंस में। चेतन चौधरी बहुत ही एडवांस टैकल्स वहां पर करने चले गए और चेतन चौधरी की थोड़ी सी चूक एज अ कैप्टन वहां पर उन्हें वो मुकाबला कॉस्ट कर गई। एक समय था जब चोला वीरंस ऑल आउट हो सकता था, बट दिस इज व्हाई वी आर कॉलिंग द चोला वीरंस आर दी अनदर चोला वीरंस। और ये चोला वीरंस बहुत अलग है, जिन्हें हमने सर्वाइवल 1 के आखिरी में और सर्वाइवल 2 की शुरुआत में देखा था। ये जीतना जानती है, ये एज अ टीम खेलना जानती है। और आज एडवांस टैकल्स कम नजर आए, टीम अच्छा खेली, टीम अच्छा जीती और यही परफॉर्मेंस आपको चाहिए। ऐसी परफॉर्मेंस आपको दिखलानी है। 5 टैकल पॉइंट चोला वीरंस के लिए, 2 ऑल आउट पॉइंट, 7 टैकल पॉइंट रावली एरोज, 19 रेड पॉइंट्स आगे हैं। बट एक्स्ट्राज पूरी तरह से इस मैच में एक्स्ट्रा ने सब कुछ बयां किया और वो 3 एक्स्ट्राज पॉइंट मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से मैच को बदल दिया। एक सुपर हिट बड़ी अच्छी थी। Yeah, absolutely. That was nice, and look at that, the all-out points. That's in the favor of the Chola Veerans. That's what actually turned it around. And those extras are shit there. In a super tackle situation, Brijpal Singh running around to the lobby without a touch on the defender. And also, there was that extra, that all-out 2 points going in. So nice that the Chola Veerans have started off once again the booster round in a very nice way. 2 matches, 2 victories. Wonderful work. Ankit Jat with his 4 points becomes the best defender, but Arun Kumar Anjapuli 12 raids, 7 raid points. Wonderful. He's always had that 60-65% of the total strike rate on the raiding department, but apart from that he's not just going out there and doing everything. I hope Rajendra Rajasekaran's leg is all okay. He's got that injury, he's okay with that, because every raider had to come in. Vignesh Babu, Vignesh Murugesan, everybody had to come in. Ankit Jat gets the 4 tackle points out of 5 total tackles attempted. 80% is total success rate. That's what he will be happy about.
So wonderful to see that the Chola Veerans once again right on top. 2 places been captured by the 2 teams who were really lagging behind in the points table. Chambal Challengers and Chola Veerans are yet to lose a match. And Periyar Panthers and Palani Tuskers, of course, they've lost one. And Hampi Heroes, they got that tie match today against the Palani Tuskers. Ravli Arrows, 2 losses out of 2. And also the Sin Sonics. So that is what the points table reads as we'll sip on a short break and come back soon for the post-match award ceremony with Harshit. And then after that, we also have the post-show. Stick on with us, live and exclusive on Fan Code. I'm Navin Shori. तो हम सभी के समक्ष था एक और अद्वितीय दिन इस बूस्टर राउंड का। युवा कबड्डी सीरीज समर एडिशन के इस पोस्ट मैचेस प्रेजेंटेशन में आप सभी का अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। इस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की शुरुआत की जाएगी विद थैंकिंग ऑल आवर पार्टनर्स, हमारे ब्रॉडकास्ट पार्टनर फैनकोड, फैंटेसी पार्टनर ड्रीम 11, फिजियो पार्टनर डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस जेएसएस कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, हॉस्पिटलिटी पार्टनर जिंजर होटल, और हेल्थ केयर पार्टनर रामाकृष्णा स्पेशलिटी हॉस्पिटल। एंड इन द प्रेजेंटेशन टुडे वी हैव अ वेरी टैलेंटेड गर्ल, फर्स्ट रश एंड फर्स्ट ड्रॉपर काव्या केआर, सीनियर नेशनल गेम्स medalist and medalist in Khelo India Hockey। आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। ये मुकाबला खेला गया जो सबसे पहले था चंबल चैलेंजर्स बनाम सिंसोनिक। अभी तक सिंसोनिक ने 2 मुकाबले जीते थे अगेंस्ट चंबल चैलेंजर्स, बट इस बार चंबल चैलेंजर्स ने इस मुकाबले को एक कंफर्टेबल विन के साथ बतलाया कि वो भी तैयार हैं इस बूस्टर राउंड के बदले के लिए। सीधा चलेंगे अब अवार्ड्स की तरफ। शुरुआत करेंगे अवार्ड्स की विद फर्स्ट बेस्ट रेडर ऑफ द मैच के साथ, जो रहेंगे चंबल चैलेंजर्स के वेरी लीथल अटॉल मैन संस्कार मिश्रा, जिन्होंने प्राप्त किए 19 इनविंसिबल rate points. Let's have a look at his performance. और अब समय है बेस्ट डिफेंडर ऑफ द मैच की तरफ चलने का। तो सिंसोनिक की टीम के सिर्फ एक खिलाड़ी ने 8 टैकल अंक प्राप्त किए थे उन 10 टैकल पॉइंट्स में से, और सोलो मैन यहां पर आर्मी के तौर पर प्रस्तुत करते हुए नजर आए थे विनीत कुमार, बट अपनी टीम को वो जीत नहीं दिला पाए। बट उनके लीथल टैकल्स भी अब आप सभी के समक्ष हैं।
और अब समय कबड्डी कमाल ऑफ द मैच का। तो जिन्होंने इस मैच में करीबन 3 या 4 बड़ी सुपर रेस नजर आई, कुछ 2 यहाँ पर 4 पॉइंटर वाली रेट थी, एक 3 पॉइंटर वाली रेट थी, वो लगाई थी राहुल गोपे ने, और इसी के चलते इस खिलाड़ी को मिलेगा कबड्डी कमाल ऑफ द मैच। एंड आफ्टर दैट चलिए उस मुकाबले से उतना ही, बट चलते हैं मैच नंबर 2 की तरफ जो आज के दिन में खेला गया। नीलगिरी नाइट्स बनाम पेरियार पैंथर्स, दोनों ही टीमें एक बहुत ही अच्छे प्रदर्शन के साथ आ रही थी, जिनका कॉन्फिडेंस बहुत ही ऊपर था। बट नीलगिरी नाइट्स पिछला मैच पलनी टस्कर्स को हराया, तो बोला कि इस बार चलिए पेरियार, इस बार आपकी बारी है। 28-24 से मुकाबला अपने नाम किया। शुरुआत पेरियार के पक्ष में थी, बट अंत बला तो सब बला, कहा नीलगिरी ने। सीधा चलेंगे रिकॉग्निशन की तरफ, शुरुआत करेंगे विद द बेस्ट विनर ऑफ द मैच के साथ, जो रहेंगे नीलगिरी नाइट्स के एस मरिमुथु सेल्वम, जिन्होंने प्राप्त किए 9 रेड पॉइंट्स और 9 डिसाइसिव रेड पॉइंट्स। लेट्स हैव अ लुक। और कहना पड़ेगा बहुत ही अच्छा वो मुकाबला जीता नीलगिरी नाइट्स से। कुछ टफ फाइट्स थी और एक अच्छी विन अपनी टीम के लिए आई। बट अब समय बेस्ट डिफेंडर ऑफ द मैच की बात करने का, तो नीलगिरी नाइट्स के लिए हमेशा संतोषजनक जिन्होंने प्रदर्शन किया एज ए राइट कॉर्नर डिफेंडर, वो बड़े ही अद्भुत हैं, और वो हैं एस संतोष श्रीनिवासन, जिनके आज भी 4 टैकल पॉइंट्स अपने नाम किए और बतलाया कि कैसे किए जाते हैं राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर से टैकल्स। और कब ये मुकाबला नीलगिरी नाइट्स के पक्ष में आया, आइए उस कहानी को आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूं। एक बार लग रहा था कि क्या पेरियार पैंथर्स का मजबूत डिफेंस नीलगिरी नाइट्स के रेडर्स को रोक लेगा, बट एक खिलाड़ी मौजूद थे नीलगिरी नाइट्स में जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और कबड्डी कमाल ऑफ द मैच विनर भी वही है, एस मरिमुथु सेल्वम, जिन्होंने लगाई गेम चेंजिंग शानदार सुपर रेड। ओके, तो ये सुपर रेड के पश्चात अब हम सुपर धन्यवाद कहते हैं हमारे साथ मौजूद यहाँ पर काव्या का। बट अब मैं नेक्स्ट अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए इनवाइट करना चाहूंगा प्रगति सी के खेलो इंडिया मेडलिस्ट इन हॉकी। अ ह्यूज वेलकम इन द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। और बात करेंगे अब नेक्स्ट मैच की, जो भी एक और बहुत ही अद्भुत मुकाबला था। पलनी टस्कर्स बनाम हम्पी हीरोज। सर्वाइवल 1 की कहानी इस बूस्टर राउंड में फिर से दोहराई गई है। टाई के साथ मुकाबला समाप्त हुआ है। 3 कड़ी भिड़ंत, जिसमें से 2 टाई बताती है इनकी राइवल कितनी फेमस बन रही है। जी हां, समय है सीधा चलते हैं रिकॉग्निशन की तरफ। शुरुआत करेंगे विद फर्स्ट बेस्ट रेडर ऑफ द मैच के साथ, जो रहेंगे हम्पी हीरोज के। इनके अलावा और कौन हो सकता है? ग्लोरियस गगन गौड़ा, जिन्होंने प्राप्त किए 18 रेड पॉइंट्स। और गगन की इच्छा थी कि ये अवार्ड वो प्रगति के हाथ से कलेक्ट करें, तो यहाँ पर उन्हें अवार्ड प्रगति के हाथ से मिला है। बट अभी समय बेस्ट डिफेंडर ऑफ द मैच की बात करने का, वो भी रहेंगे हम्पी हीरोज की तरफ से, और वो हैं सुकेश कुलाल, जिन्होंने 5 टैकल पॉइंट्स निर्धारित किए अपने खेमे के लिए। और बात करते हैं कबड्डी कमाल ऑफ द मैच की, तो पूरी तरह से मैच को अंत में आते आते जिन्होंने पूरी तरह से बदलाव करके दिखलाया और जेट की स्पीड से इधर उधर हुए और अपनी टीम के लिए पॉइंट लेकर आए, वो थे एक बार फिर से जेट पशुपति। और आज के दिन के अंतिम मुकाबले की प्रेजेंटेशन में चलते हैं, और वो मुकाबला खेला गया अरावली एरोज बनाम चोला वीरज। ये भी किसी हाई थ्रिल क्लाइमेक्स से कम नहीं था। बहुत ही शानदार मुकाबला चला, और इस पूरे मुकाबले में हमें लगा कि कौन जीतेगा, कोई इधर तो कभी उधर। बट अभी समय है रेडर ऑफ द मैच की तरफ चलने का। वो रहेंगे एक शानदार खिलाड़ी जिन्होंने अपनी टीम के लिए आज मैक्सिमम पॉइंट प्राप्त किए। वो है चोला वीरज के अरुण कुमार अंजुबोली, 7 रेड पॉइंट, बट बहुत ही महत्वपूर्ण रेड पॉइंट्स।
तो बात करते हैं बेस्ट डिफेंडर ऑफ द मैच की। तो आज इस खिलाड़ी ने फिर से अच्छा खेला, बट इन्हें बाकी डिफेंडर से वो साथ नहीं मिला कि रावल एरोज के मुकाबले में जीत दिला पाए। ये अवार्ड जाएगा रावल एरोज के अंकित जाट को, जिन्होंने प्राप्त किए 4 टैकल पॉइंट्स, पर वो 4 टैकल पॉइंट्स अंतिम टैकल में नहीं जा पाए, इसी के चलते मुकाबला उन्हें हारना पड़ा। और रावल एरोज के दर्शक चाहेंगे कि अंकित जाट अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखे, बट अपनी टीम को यहां पर लगातार अच्छा करने पर मजबूर करें। अभी समय लास्ट बट नॉट द लीस्ट अवार्ड ऑफ द डे, कबड्डी कमाल ऑफ द मैच, और वो जाएगा पूरी तरह से जिन्होंने हम सभी को बहुत इंप्रेस किया। पहले 10 सेकंड उन्होंने लिए और उसके बाद जब वो गए तो एक शानदार टो टच के साथ मुकाबला अपने पक्ष में किया। वो थे चोला वीरंस के मोहनदास विश्व मोहन। So that's all from the post-match presentation. आज का ये मंडे निश्चित तौर पर मार्वलस मैजिकल था आप सभी के साथ। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। जुड़ना मत भूलिएगा, भी हम सभी ले चलेंगे आप सभी को YKS लाइव में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और समय का चक्रव्यूह हमें ले चला है एक नए दौर की तरफ। बूस्टर राउंड का ये दूसरा दिन क्या एफर्वेसेंट रहा था। बहुत सारे अद्भुत मुकाबले यहाँ पर हम सभी को नजर आए हैं और क्या समाप्ति हुई है इस मुकाबले के साथ। बट मेरे साथ नवीन जौहरी, स्वागत है नवीन आपका। Thank you so much, Arshid. Yes, once again we saw a day where the Palani Tuskers could not win. Once again we saw a day where the Chola Veerans won their second match.
Once again, we saw a day where the Chambal Challengers went ahead and won their second match, and they are now on the points table at the top of the list. And this is the booster round where nothing is expected and just expect the unexpected. That's what it's going to be. जी उथल पुथल पूरी तरह से यहाँ पर हुआ है। बट आइए सबसे पहले अगर आपने चंबल चैलेंजर्स के टॉप पे बात की है तो पहले अंक तालिका की तरफ यहाँ पर चलते हैं और अंक तालिका पे अगर हम देखें उसके पश्चात हम बात करेंगे कौन कौन से मुकाबले आज किसके पक्ष में गए थे। बट चंबल चैलेंजर्स आर ऑन द टॉप, दोनों ही मुकाबलों में 6-6 अंक उन्होंने पूरी तरह से प्राप्त किए। बट माय फेवरेट सबसे ज्यादा निगाहें जिन पर है, चोला वीनर्स आर द सेकंड, नीलगिरी आर एट द थर्ड। तीनों ही टीमों ने दो मुकाबले अपने जीते हैं। Yeah, and very nice to see that the Nilgiri Knights have gone up there, even with the new coach coming in. They have not changed too much on the lineup. Somewhere they're there on that top 3 list, and Chola Veerans especially, they'll have to work out on their injuries a bit. Today, Rajasekharan Rajendran getting injured was not right. Of course, Vignesh Babu came in to become that third raider from the bench. And after that, yeah, Periyar Panthers, Palani Tuskers. Can you ever imagine? They are at the 5th place on the points table. That is just unbelievable with that one tie that they got against the Hampi Heroes out there at number 6 as well. And 7, Aravali Arrows and Sinsonics. Yeah, the Aravali Arrows, yeah, that raiding department was good today, but it has to be a little more better to go out there on the points table. जी हाँ, बहुत कुछ बदलाव हुआ है बूस्टर राउंड में और बूस्टर राउंड में बूस्ट अप करने की आवश्यकता है। ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ तो सिंसोनिक 8वें पायदान पर मौजूद है, उन्हें अच्छा करना पड़ेगा। सागर की इंजरी को थोड़ा सा और समय देना है, बट राजू और दीपक को स्टेप अप करना पड़ेगा। इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, बट आज के रिजल्ट्स की तरफ एक बार चलते हैं कि किसके लिए वो दिन गए। हालांकि आपने पॉइंट्स टेबल देखा है, आप समझ चुके होंगे कैसे कैसे मैचेस आज बहुत ही इंट्रोलिंग रहे। बट सबसे पहला जो मैच था ना, चंबल चैलेंजर्स अभी तक जीता नहीं था सिंसोनिक के अगेंस्ट। सर्वाइवल 1 सर्वाइवल 2 में दोनों बहुत कड़क मुकाबले थे, दोनों मुकाबले सिंसोनिक ने अपने नाम किए। बट आज चंबल चैलेंजर्स ने उन्हें हराया। Yeah, we will run through this list as we will keep on speaking about every match one by one. Nilgiri Knights against Periyar Panthers, and again Palani Tuskers with that tie match against the Hampi Heroes, and Aravali Arrows, of course, losing against the Chola Veerans. We will run through this list as we will be speaking as per match as we get in. And the first up, of course, Chambal Challengers on that Sinsonics. That was a lovely match to see. चंबल चैलेंजर्स क्या शानदार मुकाबला वहां पर चला, अच्छा डिफेंस खेला। सबसे अच्छी बात कपिल गुर्जर, अंकित गायनंदे, उन दोनों को 3-3 टैकल पॉइंट्स मिले और एम गोपी ने भी वहां पर अपने लिए बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छा असिस्ट था। इसी के चलते डिफेंस में देखने को मिल सकता है चंबल चैलेंजर्स जहां गलती कर रही थी वहां आज उन्होंने उस एरर्स को रेक्टिफाई किया। Just marvelous, isn't it? And without their lead raider, without their captain, if they're able to do such things, 25 on the raid punch, that's good. And also for the Sinsonics, the raiding was good, but they have gone ahead and made sure they have won the war with the defense. And nevertheless, that was a very, very nice match. But of course, that Kabaddi Kamal was really Kamal, isn't it? जी हाँ, आज एक खिलाड़ी लेफ्ट फील्डर ऐसा नजर आया। कल आप उनके नाम पर बात कर रहे थे कि आपने एक मैच में उनके 17-18 अंक देखे थे, बट आज उन्होंने 3 सुपर रेड लगाई, 2 सुपर रेड 4 अंकों की थी और एक रेड में वो 3 अंक लेके आए, यानी कि 3 ही रेड में 11 अंक उन्होंने प्राप्त किए नवीन, और वो और कोई नहीं थे बल्कि नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, राहुल गोपे। Yeah, very nice for Rahul Gope, for the Sinsonics to go out and then do this. And this also suggests, see, if the Chambal Challengers have won it via the defense, Rahul Gope coming in and getting all these Kamal moments in the raiding department, he did not have support. Raju Singh not supporting him. See, that's clearly suggesting what it is. So Chambal Challengers, they could not manage to stop, Rahul Gope, but they also gone ahead and also won that with defense. या बट अगर हम बात करें, आपने बात की सपोर्ट की, तो आज उदय पात्रे की तरफ से एक रेडर को बहुत अच्छा साथ मिला, और आपने बात की दुर्गेश नहीं थे, पर दुर्गेश की वहां पर न होने के पश्चात जिस खिलाड़ी ने बहुत अच्छा स्टेप अप किया वो कौन है? संस्कारों से परिपूर्ण संस्कार मिश्रा। और आइए संस्कार मिश्रा को हम इनवाइट कर लेते हैं कुछ थोड़ी सी वार्तालाप करने के लिए। स्वागत है तुम्हारा संस्कार। थोड़ा भोजपुरी बोल लेते हैं? नहीं सर, चलिए कोई बात नहीं। संस्कार या कितने संस्कार भरित रेड लगाते हैं आप, वो बताइए। और मुझे ये बताइए कि आपकी स्पेलिंग में एक एक्स्ट्रा एच है क्या? आप न्यूमरोलॉजी में या नामकरण में ऐसे कुछ बिलीव करते हैं क्या? एक एक्स्ट्रा एच है, संस्कार करके लिखा है आपके पीछे। नहीं सर, संस्कारी है। सही है। और दुर्गेश का ना होना मैच पे आपके ऊपर कितना बोझ या कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है आपके कंधों पे? सर मैं तो चाहता हूँ जल्दी से जल्दी इंजरी ठीक हो, उसकी इंजरी के चक्कर में वो बाहर है। 1-2 दिन में अभी वो आपसे कर लेगा, उसके बाद फिर हमारी टीम सेट हो जाएगी। फिर अभी तो पूरा मतलब मेरे को और मेरी टीम के ऊपर भरोसा है मेरे को कि हम अच्छे से ही खेलेंगे सर। क्या बात है, यानी कि जितना प्रिपेयर्ड ये आपको ऑन मैच लगते हैं उतनी ही प्रिपेयर्ड ये इंटरव्यू के मुझे लग रहे हैं। पर संस्कार बहुत अच्छा आप खेले, और क्या किया आपने ऐसा? क्योंकि संस्कार शुरुआती फेजेस में अगर हम बात करें तो उतना बेहतर आप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, बट खासकर जब से दुर्गेश न हो या फिर दुर्गेश जब अपने साथ दिया है तो अचानक से सर्वाइवल 2 के बाद से एक नया बदलाव आप में आया है, हाई पॉजिटिव एनर्जी आप में नजर आ रही है।
ये सर पहले क्या है, एक बड़ा भाई है, छोटा भाई ऐसा करके खेलते थे अपन की, पहले तू फिर मैं ऐसे करके, लेकिन अब पूरा कंधा उसके शोल्डर डिसलोकेट होने के बाद से पूरा मेरे ऊपर ही आ गया। उसके बाद मेरे जो रेडर लोग हैं वो मेरे को उनके ऊपर भरोसा है, मेरे डिफेंस के ऊपर कि मेरे को वो जिंदा कर देगी। तो मेरे कोच साहब बोलते तू खुल के मार। अब मैं मारता हूँ, पॉइंट आ रहा है, फिर मैं अगर आउट भी हो रहा हूँ तो मेरे डिफेंस वाले मेरे को जिंदा कर दे रहे हैं। चलिए, बड़े भाई का काम भी आप साथ रह के निभा रहे हैं, अभी बड़े भाई का काम भी निभा रहे हैं आप। आपके कंधे सादा सलामत रहे, लेकिन आप इधर क्यों मतलब बात कर रहे हैं, ये जानते हैं आप? नहीं सर। नहीं जानते? नहीं। ऐसे आ गए, माइक पकड़ा दिया, ऐसे आ गए। अरे यार, टॉप 3 रेडर्स के लिस्ट में आपका नाम आ गया, 3rd बेस्ट रेडर बन गए आप आज से। तो वो कितना संतोष दे रहा है आपको, वो कितना खुशी दे रहा है, क्योंकि 100 रेड पॉइंट्स। अब उसके बारे में बताइए पहले। सर मेरे कोच साहब की मेहनत है और हमारी टीम की जो स्ट्रेटेजी थी उसके हिसाब से खेले हैं और हम आज यहाँ हैं। क्या बात है, यानी गुरु पूर्णिमा में गुरु को दक्षिणा यहाँ पर दिया। और जरूर प्रदीप यादव साहब अगर आपको सुन रहे होंगे तो बहुत खुश होंगे। बट संस्कार, यूं ही आप मुस्कुराते रहें, यूं ही रेड पॉइंट्स अपनी टीम के लिए लेकर आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्या बात है नवीन, क्या कहा इन्होंने, सारा श्रेय जो दिया वो कोच को दिया और कोच जरूर खुश होंगे। और देना भी चाहिए ना वैसे, क्योंकि बहुत दिनों की मेहनत होती है, एक दिन में कोई खिलाड़ी नहीं पनपता है। वो जो कहानी होती है वो बहुत बड़ी कहानी होती है। बट कहानी तो वैसे ही आज नीलगिरी नाइट्स ने भी लिखने की कोशिश की नवीन। Oh yeah, definitely. Nilgiri Knights once again going out there, and in fact they had that injury woes on the kabaddi mat. Even though they had that injury problems, they made sure somehow they just scraped through, and that entire unit was very, very good because they had that little bit of an issues. But nevertheless, as Nilgiri Knights comes out there, look at that, 12 raid points and 13 tackle points. That is once again speaking volumes of what Nilgiri Knights can actually bring out there. And going ahead with injuries is what I was trying to say, is a little bit of a niggle in the waist, because what happened there to their captain Marimuthu Selvam, he's got that little bit of a niggle there in the waist, and they've got a new coach from today, Rajaram. He very clearly said, listen, if you can go out there, get touch points, get it, or else it's okay. But Marimuthu said, no coach, I'm going out there and getting touch points. But Periyar Panthers, I did not expect this. Lokesh Gosalia yesterday, he got 9 tackle points, and today the entire team got 9 tackle points. Harshit, I think the defense let them down very big time. जी आज डेस्परेटनेस थोड़ी सी नजर आ रही थी कभी कभार, खासकर एस मारीमुथु सेल्वम के विरुद्ध। शुरुआत में उन्होंने अपनी हॉर्सेस को बहुत अच्छा होल्ड किया था, रेडर्स ने अच्छा किया। गोपाल और रोहित यादव को वहां पर 12 पॉइंट मिले, एक रिजपाल जाट को मिला था, जिसके चलते 13 रेड पॉइंट्स थे। बट अब आइए बात करते हैं कि कहां से मुकाबला पलटा था। तो बहुत ही अच्छा, और शुरुआत में नवीन आप वहां पर थे एज ए कॉम्बॉक्स, पर लग रहा था शुरुआत में कि पेरियार पैंथर्स वहां पर नजरें बना रहा है। बट एक शानदार सुपर रेड आई एस मारीमुथु सेल्वम की, ऑल आउट बचाया और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। Yeah, that is where he saved the team, because he was the last man standing there. He went out there. Let's watch that Kabaddi Kamal moment as well of S. Marimuthu, the captain. He had a little bit of an issue in that waist, but this was the last man standing. He went out there, kicked Lokesh Gosalia on the left shoulder. Lokesh Gosalia so strong on all those ankle holds. Kicked him, and then he also got the right cover on his way back, and that was just marvelous to see what Marimuthu got to the table. And it was good that the Nilgiri Knights has gone out there, even with the new coach, they've got along together nicely. And today, even Velavan got 1 raid point in a do-or-die raid. What is happening with Velavan? Is he becoming the new do-or-die raid expert? या और इसके बारे में लगातार हम चर्चा कर भी रहे थे। और अगर वो एक और शायद सुपर टैकल का मौका था जब वहां पर वो डुआ रेड पर गए थे, हालांकि खुशकिस्मत रहे वहां पर कि उन्हें पॉइंट नहीं मिला, अन्यथा वो पहली रेड भी लगा सकते थे दूसरे मुकाबले में, अगले मैच में। बट अभी आइए मैच नंबर 72 की तरफ चले। वो भी एक बहुत बड़ा मुकाबला था। जो राइवलरी की हम बात करते हैं ना, 3 में से 2 मुकाबले उनके टाई हो जाना, वो बयां करता है कि दोनों ही टीमें जब एक दूसरे के विरुद्ध होती हैं, शक्तियों को मैनिफोल्ड कर लेती है, कई गुना बढ़ा लेती है। Yeah, definitely. Hampi Heroes generally are, as a team, they go out there and win matches. But today, I don't understand what happened. From a position of a win-win situation, they went out there and surrendered for the draw. I use that word surrender because Palani Tuskers very intelligently did, you know what, they tackled out Gagan Glorious Goda. First, that was the target. And then, in that attack, where Jet Pasupati actually went in, he took out Teja Nayak in the last raid where he went out. So when Teja Nayak was out and no Gagan Gowda, nobody else to raid out there, and Suhas had to go in for an unnecessary tie, which was not at all happy for one child who was standing there in the stands, and she was shouting, losing all her front teeth. She just lost all her milk teeth out there, and she was shouting, go for the bonus, go for the bonus, go for the touch point, and she was not happy like me, Harshit. I'm never happy with tie matches in Kabaddi. No, never, never, never. चलिए नवीन, ये तो अच्छा था कि वो टाई से खुश नहीं थी, बट वो तुम्हारे रेफरीज के कई डिसीजन से सहमत नहीं थी, और खासकर जब पल्ली टस्कर्स के दक्षर में आए थे और
आइए अगर हम बात करते हैं जिस तरह से इस पूरे क्षण की हमने बात की और वो थोड़ा सा हम अंत में दिखाएंगे, हमारे दर्शकों को भी हम बहुत सारा वहां पर दिखाएंगे, बट अभी बात करते हैं कि कैसे मैच पलटा था। जो आपने आइडलिक गेम की बात की, वहां पर पशुपति गए और रेडर को उन्होंने शिकार बनाया, क्योंकि तेजा नायक ने पिछली रेड में बोनस वहां पर अर्जित किया था, बट इस बार उन्होंने पूरी तरह से गेम को बदला, तेजा नायक को शिकार बनाया और सिर्फ सुहास को अकेला छोड़ दिया। And that to see how end line defense. Look at that. Teja Nayak couldn't just go back. That's it, because that is the end line. After that, it was just stepping outside the end line. That's all. But that was wonderful. That is why he's called the Jet. He utilized all the fuel in the jet of the fuel tank. He just went out there. And Arshit, that happened in the last 5 seconds of the raid. So 25 seconds he's been running around from left to right, right to left, and then he goes and attacks Teja Nayak. Wonderful, wonderful work. That should be the Kamal moment of that match. But yeah, apart from all that jet and all that we are speaking about, but there is one man who's come in as a big support for that team, isn't it? जी हाँ, बहुत ही अच्छा सपोर्ट वहां पर लगातार टीम के लिए रहा था। और पर एक और गगन की भी बात करें अगर, तो उन्होंने 18 रेड पॉइंट्स प्राप्त किया। शशांक वहां पर टीम के लिए मौजूद नहीं थे, उसकी एब्सेंस में भी गगन ने अच्छा किया, बट जो डिफेंस था पूरा पलनी टस्कर्स का, वो पता था कि कैसे कब सेटअप करना है। जैसे जेट पशुपति ने वहां पर स्टेप अप किया और सेटअप किया डिफेंस को, क्योंकि तीनों डिफेंडर को एक तरफ कर दिया था और उसके पश्चात वहां पर तेजा नायक को जाकर शिकार बनाया। Yeah, very nice. And also just moving ahead with that match number 73 as well, where we were just wondering to see if Chola Veerans can do it against that team, even with some raiders getting injured, especially Rajendran. When Rajendra Rajsekharan got injured, I was feeling, is this the Chambal Challengers once again going back to whatever they did in the survival round? But no, Aravali Arrows could not take up that pressure. I think, Harshit, the only problem there was that all-out. See, raid points are equal. Defense, yes, just 1 or 2 points, even better. Aravali Arrows has got better defense point, but that extras. You remember Bridgepal running into the lobby in a super tackle situation. He ran into the lobby without a touch on the defender. That gave away the extra point and also the all-out points. And that is where the Chola Veerans have won this match comfortably. जी, इसीलिए कहते हैं ना कि अंत अच्छा करना आपके लिए बहुत जरूरी है, चाहे आप कैसे भी शुरुआत करें। लगभग 40-50% में अरावली एरोस बहुत आगे था और ऑल आउट की तरफ यहां पर लगातार लेकर जा रहा था, बट एक खिलाड़ी ने राजाशेखर नहीं होने के पश्चात भी वहां पर बहुत अच्छा किया। और जब वो रेड पर आए अंत में, शुरुआत के 10-15 सेकंड 20 सेकंड हमें लगा कि ये एम्प्टी जाएंगे, बट उसके बाद अचानक से एक्सीलरेट किया, अचानक से एक स्पार्क आया और लाइटनिंग स्पीड के साथ वो कमाल मोमेंट दिखा दिया। सिर्फ बताएंगे नहीं, उसके बारे में आप सभी को शो भी करेंगे वो मोमेंट। Oh, definitely, Mohan Das, wonderful work. First of all, I really need to talk to him first and ask whether he's a left raider or a right raider, because we saw him raid from both the sides as well, because especially against Ankit Jat, who was very nice against all the right raiders. And look at Ankit Jat's reaction. He is livid. He's just very angry with all the support staff that came in, who did not stop Mohan Das from crossing over to the midline, because Ankit Jat today was very good against the right raiders, but against the left raiders he was actually struggling. But to talk about all that, can we call in the man himself and to ask him? या मोहन दास विश्व मोहन, क्या बात है, और उन्हें हम इनवाइट करना चाहेंगे। क्या बात है, चेहरे पर आते ही मुस्कुराहट नवीन। और सबसे पहला प्रश्न आप कीजिए। खंडिपा मोहन, नी फर्स्ट எனக்கு இது சொல்லு, நீ லெஃப்ட் ரேடரா ரைட் ரேடரா? ரெண்டு பக்கமும் ஆடுறேன்னு போய் சொல்லக்கூடாது. See, he is lying again. He is saying two sides also I'll raid. No, but உனக்கு வந்து மனசுல நீ ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறது வந்து ரைட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிற. கரெக்ட்டா? மைக்க கிட்ட பிடிச்சுக்கோ. ரைட்ல தான் ஆடும். ஓகே, சோ எப்படி ஏன் நீ லெஃப்ட் ரேடரா இன்னைக்கு ஏன் மாறன? ஏன் உன் மனசுல என்ன ஓடிட்டு இருந்துச்சு? ரைட்ல டிஃபென்ஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சு. ரைட் கார்னர் நல்லா டிஃபென்ஸ் ஆடுனாப்ல. அதனால லெஃப்ட் ட்ரை பண்ணி பாப்போம்ட்டு லெஃப்ட்ல ட்ரை பண்ணேன். அட்வான்ஸ் கார்னர் அட்வான்ஸ் பண்ணாரு. லெஃப்ட் கவர் ஸ்லோ, அப்புறம் try பண்ணி வந்துச்சு. Super, Varshit. See, same things that we said in commentary, same things that we said before he walked in. Same thing. Because Ankit Jat was very strong, he went ahead, and because he was strong on that right corner, he wanted to turn around as a left raider, go for the touch points, maybe the toe touches or hand touches, and that is why he also, see what lovely point he said was, left cover was a little slow for the attack, and that is why I changed myself as a left raider. That's what he said. Brilliant decision. But இங்க வந்து சர்வைவல் ரவுண்டர் அவ்வளோ சொல்ல முடியாத அளவுக்கு தோத்த பிறகு இப்போ பூஸ்டர் ரவுண்ட் ஆரம்பிச்சிருக்க இந்த ஒரு மகிழ்ச்சி எப்படி இருக்கு? டீம் இப்போ என்ன சொல்றாங்க? ராஜா சார் இப்போ வந்து எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கு? இப்போ கோச் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு. டிஃபென்ஸ் இப்போ நல்லா இருக்கு. முன்னாடி வந்து ரொம்ப அவசரப்பட்டுன்னு டிஃபென்ஸ் பண்ணோம். இப்போ நான் ஏறி இறங்கி கொஞ்சம் ஆடுவோன்ட்டு நல்லா
கோஆர்டினேஷனாக இப்போ ஓரளவுக்கு ஆடுறோம். இன்னும் சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் தான், சரியாயிட்டுனா இன்னும் பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு டீம். ஓகே, கடைசி கேள்வி நீங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் தொடர்ந்து வந்து அந்த 8 தோல்வி நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்க சர்வைவல் ரவுண்டில். அந்த தோல்வி நேரத்தில் என்னதான் ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு? நீங்கள் ரூமில் இருக்கிற நேரத்துலையோ இல்லை ராஜா ஓடிய நீங்கள் வந்து அந்த பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிற நேரத்துலையோ உங்கள் டீம் மீட்டிங் நேரத்தில் அவர் என்னதான் சொல்லிட்டு இருந்தார்? 8 தோல்வி வந்து அதுலேருந்து வெளியே வர்றது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை. ஸோ என்னதான் அப்போ அந்த நேரத்தில் என்னதான் பேச்சுவார்த்தை போயிட்டு இருந்துச்சு? கோச் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார். ஹெவியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம். 2 வேளையும் லீவ் விடுற டைமில் 2 வேளையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம். நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு. இதனால தான் மிஸ்டேக் ஆகுது. டிஃபென்ஸ் நிற்க மாட்டோம், கொஞ்சம் நல்லாவே டிஃபென்ஸ் இல்லை. 8 தோல்வி தொடர்ச்சியாக தோல்வி ஆகணும். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப மீட்டிங் போட்டு யார் என்ன தப்பு பண்ணோம் எல்லாத்தையும் சொல்லி கேட்டோம். அப்புறம் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் டிஃபென்ஸ் சின்ன சின்ன தப்பு இருந்துச்சு. அப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் சரி பண்ணி போன மேட்ச் விளாட்னோம். ஒரு டீம் கூட ஜெயித்தோம். இது கஜரங்க ரன்னர்ஸ் கூட ஜெயித்தோம். அதுக்கப்புறம் சிந்து சோனிக்கில் கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம நல்லா விளாட்லாம் சொல்லி எல்லாம் நல்லா பேசி இப்போ நல்லா விளாட்றோம். அருமை. Harshit, that 8 matches when they were losing, they went out and practiced hard. They were not let go on by Raja. 2 times in a day they used to practice. Wow. Even with the matches on, 2 times in a day they used to practice and they have got it nicely. Wow. So lovely. இது அந்த அடி பத்தி எதனா சொல்ல முடியுமா? ராஜசேகரனுக்கு விழுந்த அடி பத்தி எதனா சொல்ல முடியுமா சீக்கிரம்? தெரியல, ஆங்கிள் ட்விஸ்ட் நினைக்கிறேன். He needs an update on Rajsekharan as well. We'll need to get that official verdict and the update. Lovely, wonderful. एक अंतिम प्रश्न. Yes, विश्व मोहन, आप पूछेगा इनसे कि जब ये शुरुआती उस रेड में गए, जब अंतिम जो प्रदर्शन था, जब जहां पर मुकाबला लगभग टाई था, वहां पर आकर इन्होंने 15-20 सेकंड लिए और उसके बाद इन पर जाकर टो टच किया, जो कि मैच डिसाइसिव पॉइंट था, जिसके बाद लीड चोला वीरन्स के पक्ष में. उसके बारे में जल्दी से पूछ लीजिए. Very very good point, Harshit. First of all, நீ அந்த ரேடுக்குள்ள போன நேரத்துல 10 செகண்ட் நீ நின்று இருந்த. எம்டி ரேட் அடிக்கலாமா அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் மனசுல ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னு நம்ம நினைச்சோம். ஆனா திடீர்னு பார்த்தா 15 செகண்ட் இருக்கிற நேரத்துல திடீர்னு ஆரம்பிச்சிட்டேன். என்ன அதான் ஆச்சு? அங்க உன்னை யாரு கிள்ளி விட்டா? இல்லை, ஸ்டார்டிங்கே ஆடிட்டா அவங்களுக்கு ஒரு ரைடு கிடைக்கும். அவங்க ஒன்று செஞ்சாலும் இங்கே எதனா போகும். அதேமாரி ஒரு டிஃபெண்டர் வெளில இருந்தார். 5 பேரில் போனஸ் போட்டாலும் அது போனஸ் தான், பாயிண்ட் வரும். அதேமாரி கொஞ்சம் அவசரப்பட்டாங்க. சொல்லி அனுப்புனார் கோச்சு, போய் பொறுமையாக டைம் வேஸ்ட் பண்ணு, கடைசி டைம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆடு அப்படி சொன்னார். அதேமாதிரி கொஞ்ச நேரம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணால் ஐ லெஃப்ட் சைடில் கொஞ்சம் வீக்காக, அதனால் கொஞ்சம் லெஃப்ட் சைடில் போய் ஆடிட்டேன். சூப்பர். கௌதம் வெளியில இருந்தாலும் போனஸ் போகுதுன்னு அவனுக்கு சொல்லுங்க தயவு செஞ்சு. Thank you. Go out and enjoy the victory as well. Harshit, you know what he said? He's very clear. He said that, when I go in and started to raid immediately, the defense would have got alerted. He wanted to fox the defense, and also P. Raja has told him very clearly, go out there, take your time. So first 10 seconds he just stood and the defense was a little chilled, saying no, he's not going to come in. And suddenly when he started, he got that Kamal moment of the match. वाओ, ये सब सोचना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है और कबड्डी इसलिए कहते हैं कि जहन बहुत इंपॉर्टेंट है. बट जहन के साथ साथ कल जोश, जज्बा और जुनून भी आप सभी को चाहिए होगा. आइए कल के स्केड्यूल की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल का जो पहला मैच है ना, वो पी वर्सेस पी का होने वाला है. पलनी टस्कर्स वर्सेस पेरियार पैंथर्स. नवीन, सबसे बड़ा हाईलाइट होगा कल का मैच. Yeah, that is a big match coming up. But also, everybody watching live and exclusive on Fan Code, just note the timing. The timing is 4:15 there. The first match is 4:15. Then we have at 6:30 the second match. 5:30 correction. 5:30 where the Chambal Challengers and Chola Virans will take on upon against each other at 5:30. Then Aravali Arrows and Sonics, again note the timing. 6:45, exactly 15 minutes of buffer, and then Nilgiri Knights and the Hampi Heroes will play at 8 o'clock in the night. And 15 minutes of buffer, I think it was requested by Sagar Panchal because he was running around entire arena. He said no, I need to use the restroom, I can't get it. So 15 minutes. Ashwin has been very kind to give Sagar Panchal and team 15 minutes. Also unke friend Deva bhi. Yeah, exactly, for Deva. Deva is the only man who wants to always run to the restroom from the PCR. For him, we have given 15 minutes. Deva, after every match, you can sit in the restroom for 10 minutes. 5 minutes, you can come back to the PCR. Absolutely, but आइए वो बैठे ना बैठे, एक ऐसे दर्शक जो थी जिन्होंने बैठने का बिल्कुल वहां पर मन नहीं किया. मोमेंट ऑफ द डे की बात करते हैं, बहुत ही स्वीटेस्ट और बहुत ही अग्रेसिव अंदाज में. और जरूर उसके पश्चात अगर हम बात करें तो क्या मुकाबला था. पर नवीन, मेरे लिए जो सबसे बड़ा मोमेंट ऑफ द डे था ना, वो ये था कि दिवाकरन साहब, अब मैं उन्हें निश्चित तौर पर थाला दिवाकरन कहने वाला हूँ. और रिस्पेक्ट जो है ना, क्योंकि हिंदी में श्री कहते हैं, तो मैं श्री दिवाकरन अब उन्हें कहने वाला हूँ. जो रिस्पेक्ट उन्होंने गेन किए यहाँ पर, देखिए विपक्षी टीम के प्लेयर उनको जिस तरह से उठाया और साथ में लेकर गए. Fabulous. And today being Guru Purnima, hats off to Thala Divakaran. I have not seen any coach do it. किसी भी कोच ने ये नहीं किया है कि ऑपोजिशन का प्लेयर उधर गिरा पड़ा है इंजरी के वजह से, and then you have your team member actually been
sitting there. You go out there and he's a captain. He's a captain of the opposition team. Divakaran lifts him and he just goes out there. Fabulous. Talat Divakaran, hats off. Wonderful work. या कहना पड़ेगा यहाँ पर ह्यूमैनिटी जिस तरह से यहाँ पर जा रही थी बहुत ही अद्भुत था, बट इमोशनल बहुत हो गए हैं अब हमें चाहिए कुछ खास, अब हमें चाहिए जोश, अग्रेशन, और वो अग्रेशन पूरी तरह से यहाँ पर स्टेडियम में नजर आया था जब हम्पी हीरोज की एक सपोर्टर थी पलनी टस्कर्स के विरुद्ध और पूरी तरह से उन्होंने अपनी टीम को सपोर्ट किया. And I am so amazed and baffled. I think she's just 7 or 8 years old maximum. She's lost all her front milk teeth. Every teeth has fallen. She's come with her parents as well. And she's also got, I think, her little sister. She says, bonus point, go for the bonus. She was shouting against Suhas Nagraj when he was going in for the last raid. And she was also not happy with the referee's decision as well. She was saying, that was a reaction when the tie happened. She did not want to hear the tie. And look at her mouth, look at her teeth. There's a lot of gap in that teeth, and even then, she knows everything about Kabaddi. She knows the bonus point, she knows touch points, and she knows that it is a 40-minute game, and she was asking Suhas Nagraj to go for the touch point. Last raid, she was not happy with the tie. She was definitely not happy with the tie. That was a lovely, lovely moment. Wow. I think we have to award her, what, the biggest fan of Yuva Kabaddi series? अभी तक के सबसे सर्वश्रेष्ठ. और नवीन, एज जस्ट अ नंबर. जिस तरह से उन्होंने यहाँ जो उनके रिएक्शंस थे, उसके पश्चात जब दोनों टीमें यहाँ पर टाई के साथ बात कर रही थी, हाथ मिला रही थी, तब उन्होंने दोनों ही टीमों के लिए अपलॉज किया. वहां मेरा दिल असल में उन्होंने जीता था. बट आप सभी ने भी हमारा दिल लगातार जीता, और फैन कोड पर हम आप सभी के लिए लगातार #नॉनस्टॉप युवा लेकर आते चले जाएंगे. बने रहिएगा हमारे साथ. आज के दिन से इतना ही, अन्यथा हम पूरी रात भी बात कर सकते हैं. बट अभी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए. साइनिंग ऑफ फॉर द डे फ्रॉम हर्षित शर्मा. बट जाने से पहले हम हमेशा कुछ खास लेकर आते हैं. आज की एस्पेड वर्जन जल्दी आने वाला है. Oh yeah, absolutely. That will come soon for you. We will have a special, hashtag tag that will be coming out to you. You can ask us questions. You can ask the commentators lovely questions, and you can, of course, go out there and super tackle us, and you can put us in a do-or-die raid situation. Thank you so much, everybody, watching live and exclusive on Fan Code. I'm Navin Shori alongside with Harshit Sharma, signing off on behalf of the entire Yuva Kabaddi series. Now Deva can actually go to the restroom and take a nap. Thank you so much. Good night. Bye-bye. हम जब पूछेंगे ये सवाल जिसके लिए है, माइक उसके हाथ में आप पास कर दीजिएगा. माइक ऐसे होल्ड करना है ताकि ये फ्रंट रहे, और माइक को ऐसे रखिएगा. राजू ऐसे, ठीक है.
हेलो 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 ठीक है मैम। हेलो हेलो ठीक है, हेलो पास में रख के तेज नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है युवा कबड्डी सीरीज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज हमारे साथ मौजूद है टीम सिनसोनिक के कोच उपेंद्र सर, कैप्टन राजू और विनोद। मेरा पहला सवाल कोच सर आपसे है, बूस्टर राउंड में आपकी टीम लगातार 2 मैचेस हार चुकी है, जिसकी वजह से वो 8 पोजीशन पे पहुंच गई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैम मेरा पहला कहना है कि मेरा रेडर स्किल अच्छा है, लेकिन डिफेंस स्किल थोड़ा सा कहीं ना कहीं लूज हो जा रही है। कभी कवर लूज हो जा रही है तो कभी कॉर्नर, तो इस पे हमको काम करनी है जो मेरा डिफेंस को मजबूत कर सके। सर आगे के जो राउंड्स आने वाले हैं उसमें आप मैचेस हारना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? आगे के मैचेस जीतने के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि डिफेंस को थोड़ा सा आगे टाइट करें, अच्छा से खेले और जीतने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट अर्जित करें। डिफेंस में जो रेडिंग में पॉइंट जो ला रही है, डिफेंस में भी हमको वैसे ही पॉइंट लाना होगा। सर आप आगे आने वाले मैचेस के लिए प्लेयर्स को कैसे मोटिवेट करते हैं? मोटिवेट हम प्लेयर को ये करेंगे कि जो मैच हार गए हैं उसके लिए कोई अथी नहीं है, लेकिन आगे जो मैचेज होने वाले हैं उस पर हमको पूरा फोकस करना है और हर एक मैच को हमको खेलकर आगे जीतना है, जो हम अगले राउंड में क्वालिफाई कर सके। विनोद मेरा अगला सवाल आपसे है, प्रेम और आपका कोऑर्डिनेशन हमें बहुत अच्छा नज़र आता है, आपके काफ़ी अच्छे टैकल्स भी हमने देखे हैं, मगर अगर हम कंपेयर करें तो बाकी टीम्स के मुकाबले आपका डिफेंस बहुत कमज़ोर है। मैम इसका रीज़न है कि हम लोग का कॉर्नर जो है वो कॉम्बिनेशन नहीं कर पा रहे हैं। डिफेंस सेट हो जाएंगे तो अगले भी मैच हम लोग विन कर सकते हैं। अभी टाइम तो है हम लोग के पास, बस डिफेंस एक बार सेट हो जाए, आने वाला मैच हम लोग ज़रूर जीतेंगे। डिफेंस सेट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? सुबह हम लोग खुद ग्राउंड जाते हैं कोच सर के साथ, वहाँ जाने पर सेट कर रहे डिफेंस, पर मैट पे थोड़ा मिस्टेक हो जा रहे हैं। जैसे कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम हो जाती है, कॉम्बिनेशन में जैसे एक दूसरे को कॉर्नर कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, वही रीज़न है मेन जो हम लोग पॉइंट्स लॉस कर रहे हैं। राजू मेरा अगला सवाल आपसे है, हमने देखा है कि शुरुआती कुछ मिनट्स में आपकी टीम बहुत लूज खेलने लगती है, फिर जब वो मैच में वापस आती है तब तक बहुत देर हो जाता है, जिस वजह से आपकी टीम ज़्यादातर मैचेस हार रही है। मैम हमारा रेडिंग तो सही खेलता है, मगर डिफेंस में कुछ कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम लोग से हो जाती है, जैसे कि कवर कॉम्बिनेशन नहीं बना पाता है, और कॉर्नर में भी है कि कुछ अभी नए आए हुए हैं इसलिए उनको प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा पॉइंट लेने में। राजू सागर की एब्सेंस में कैप्टन भी आप हैं और अपनी टीम के रेडर भी आप हैं, तो आप अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? आप अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं? नहीं ऐसा तो नहीं है, टीम को लेके साथ में खेलना पड़ रहा है, इसके कारण थोड़ा प्रेशर बन रहा है, इसीलिए पॉइंट थोड़ा कम आ रहा है रेडिंग में। कोच सर मेरा आखिरी सवाल आपसे है, सागर को मैट पे वापस हम कब देख पाएंगे? देख रहे हैं जितना जल्दी उनका रिकवर हो जाए हम वापस मैट पर लेकर आएंगे। बस यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द सागर ठीक हो और फिर से हमारे टीम के लिए वो खेले और मैट पे जल्द से जल्द वापस आए। थैंक यू सो मच, आज आप सब Thank आए you, और sir. प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा Ma'am. बने। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।